that the institution is organizing. He is none other than the principal of this institution. So words find meaning when voices rise together. May I request our principal, sir, Professor Santanu Kumar Jena, Kendrapara Autonomous College, to grace this occasion and adorn his seat on the dais. I now also take this opportunity to request the head of the department of this prestigious institution, Dr. Purvasa, to kindly join them on the dais. Following them, I would like to request Dr. Dipti Roy. She is from IQAC coordinator and head of the Department of Economics, to please grace the dais and join everyone before the audience. Next, do I have the gracious presence of Dr. Devakanta Sarangi? If he is there, I would kindly request him to grace the occasion and be on the dais. Okay, I take the pardon of his absence, and then I would move forward to the next person, and the next eminent person I have Mr. Ranjit Kumar Das. He is the coordinator, RUSA, IDP. He is the reader of physics of this prestigious institution. He is very much with us, and I request him to join the guest on the dais. Disconnected. Thank you very much. We have all those eminent guests sitting before the audience to grace this beautiful scene, beautiful session. Before we proceed to the formal beginning of this session, I would like, in a nutshell, let you know about this prestigious institution, and of course, the prestigious Department of English. So begin with Kendrapara Autonomous College. I know many of us are aware of this, the legacy, the history, the beauty that this institution bears, but some of the people might be new to this place, and for their information, it's a small piece of knowledge about this premier institution and of course the department. Kendrapara Autonomous College is one of the most distinguished institutions of higher education in coastal Odisha, with a legacy of academic excellence spanning several decades. Established in 1959, the college has played a pioneering role in shaping generations of scholars, administrators, educators, and socially conscious citizens. Granted autonomous status by the University Grant Commission, Kendrapara Autonomous College has consistently upheld high academic standards through innovative curriculum design, continuous evaluation, and a strong emphasis on research and extension activities. The institution offers a wide range of undergraduate and postgraduate programs in arts, science, and commerce, fostering interdisciplinary learning and critical inquiry. With a dedicated faculty, vibrant research culture, and a commitment to inclusive education, the college actively engages with contemporary social, cultural, and intellectual concerns at both regional and national levels. Hosting seminars like this that we are organizing today, its vision is to create a dynamic academic platform for dialogue, knowledge exchange, and collaborative scholarship. And to tell you about this English department, now it's been enhanced to PG Department of English. The PG Department of English stands as a vibrant center of literary studies, critical inquiry, and language research, with a sustained commitment to academic excellence. Over the years, the department has nurtured generations of students through a balanced engagement with British, American, Indian, and world literature, while also foregrounding emerging areas like recently we have been introduced to translation studies, post-colonial discourse, gender studies, cultural criticism. With a team of dedicated research-oriented faculty members, the department actively encourages scholarly exploration beyond the classroom through seminars, workshops, publications, and interdisciplinary dialogues. Its academic vision aligns with contemporary critical frameworks, enabling students and scholars to interrogate language, power, identity, and cultural transmission.
So the Department of English had shown a particular sensitivity towards imparting literary sensitivity. Organizing and hosting this 2-day national seminar reflects the department's commitment to academic collaboration, critical engagement, and the advancement of humanities research. So the department continues to contribute meaningfully to higher education by fostering a vibrant academic environment rooted in inclusivity, inquiry, and intellectual rigor. I now taking the advantage of this moment, I would like to request, I'd like to request a very prolific member from the Department of English, Mr. Achyutananda Maharana. He is very much present here, and he's going to introduce the guest. But before that, I would very much like him to join on stage. It would be meaningful because without your cooperation, this program would never be a successful, and he is bearing a lot of responsibilities of the premier institution. I would like him to join on stage and grace this occasion. Rather, he is going to play an important role of introducing the guest. But right now, I would like him to join on the stage, please. Thank you. Thank you very much for gracing this occasion. Now the frame seems complete. Without him, this was a little incomplete, and now I'm glad that he has completed this scene in the front seats. So now, to honor scholarship, experience, and distinguished contribution, we now proceed to the felicitation of our esteemed guest. In academia, respect is not merely expressed, it is a celebration. Without that, nothing could be possible. So our student volunteers are already all set. I request them to come forward so that we could start this session felicitating our guest. I now request our principal, sir, Professor Santanu Kumar Jena, to felicitate the chief guest of this occasion, Dr. Sachidanand Mahanti. He is the member, University Grant Commission, National Fellow. Who doesn't know him? Professor Santanu Kumar Jena to felicitate Dr. Sachidanand Mahanti. Dr. Sachidanand Mahanti, I could say he belongs to this ground also. His maternal family belongs to this region, a renowned professor. He, in fact, is a professor from Hyderabad University, and he is also the former Vice Chancellor of Central University of Odisha. It's a great occasion to be with him, and we are excited to listen to him in the former sessions. The following sessions that he is going to give keynote speech today. A beautiful moment. I would request our photographs to frame this occasion. Thank you very much. Now I request Dr. Dipti Roy, IQAC Coordinator, Head of the Department of Economics, to felicitate the Chief Speaker of this occasion, Professor Purnachandra Malik, Chief Editor of BJP Bharata, and an eminent Odia playwright. I know he has, in fact, written scripts for 2 important movies and has written numerous theaters. That's the theatrical people of the older age could know that. A man of various qualities, very much into the literary field. And I have, in fact, seen his interviews many of the times on the television, but this is the first time I am going along with my audience. We are going to listen to him face to face. Thank you very much. Now I request Mr. Ranjit Kumar Das, Coordinator, RUSA, IDP, to felicitate the head of the institution, Professor Santanu Kumar Jena, Principal, without whose blessing nothing could be possible. A very gentle person. To you. I request Ranjit sir to felicitate the head of the institution. Without his guidance, without his support, nothing could be possible. He is a guiding force, taking all our actions very seriously, taking our pleas, our requests in a very generous way, guiding in a very beautiful way. Thank you very much. A beautiful moment. Giving him a flowery bouquet and of course the beautiful memento. This is the beauty of the Department of English. We take this opportunity to felicitate our guests. Thank you very much.
I now request Dr. Dipti Roy to felicitate Mr. Ranjit Kumar Das. He is also Dipti Roy, Dr. Dipti Roy, to felicitate Ranjit Kumar Das. He is representing RUSA and IDP, a reader in physics, a well-known face. Thank you very much. Now, I request the head of the institution, Professor Santanu Kumar Jaina, to felicitate the head of the Department of English, Dr. Purvasha Priyadarshini. Dr. Purvasha Priyadarshini will be felicitated by the head of the institution, Professor Santanu Kumar Jaina. Purvasha Madam has taken all the pain single-handedly with the great help of her faculty members to organize this seminar. All the credits goes to her and her teammates. Thank you very much. I request Purvasha Madam to felicitate Dr. Dipti Roy. Dr. Dipti Roy, she is the coordinator of IQSE. She is in fact taking a great credit for this, for organizing these sessions, because IQSE has helped, funded a lot for the organizing of the seminar. So I thank her very much for funding this beautiful seminar. And last but not least, I would like again to request our principal, sir, Professor Santanu Kumar Jaina, to felicitate Mr. Achyutananda Maharana, a great supporting hand, without whose support nothing could be possible. I could see a smiling man in pink color, always a smiling man, a man of simple living and high thinking. He is always a generous person to grace all kind and take all kind of responsibility of any program. It's a great opportunity that our principal sir is felicitating Achyuta sir. Thank you very much. All the job is done, and I like to request everybody to take their respective seats. This is in fact a token of our respect and love, that we are delighted to present small gestures of appreciation to our guest. So thank you very much for taking the pain of coming here and gracing this occasion with your gracious presence and the illuminating thoughts that you're going to share for all of us. I beforehand thank you very much for that. Now I would like to request the head of the institution, Professor Santanu Kumar Jaina, to offer a welcome address to the audience present here. May I kindly request the principal sir to kindly address a welcome kind of address to the people present here. And here we go. Very good morning to all of you present here. Esteemed dignitaries on the dais, Professor Dr. Sachidananda Mahanti sir, Professor Purnachandra Mallik sir, HOD English, IQSE coordinator Dr. Dipti Roy, OHV coordinator Professor Ranjit Kumar Das, Achyutananda sir, and of the dais, esteemed dignitaries, our esteemed former principal Ramachandra sir, Tapan sir, Manoranjan sir, my dear friend, and other dignitaries, respected media persons, my dear staff members and my dear students. A warm welcome to all of you to be present here from Kendrapara Autonomous College for this national seminar organized by Department of English on the topic Vocal for Local, Reimagining Literature and Translation in the 21st Century. In an era of globalization where boundaries are blurring,
the initiative to be vocal for local, a concept championed to strengthen our domestic roots, takes a profound intellectual and creative turn when applied to literature and translation. As our experts will likely highlight today, this is not about closing our doors to the world, but about opening our doors to our own rich, diverse, and often marginalized local voices. The 21st century demands that we reimagine how we consume stories. Reimagining literature means bringing local stories, folklore, and regional personal narratives are translated with cultural sensitivity and accuracy to reach a global audience, making local voices vocal globally. This seminar aims to provide a platform for vibrant academic discourse on how we can foster this change in literature and translation, aligning with the spirit of Atmanirbhar Bharat, being self-reliant in our narrative and cultural representation. We are honored to have with our esteemed resource persons who have done commendable work in this area. Your presence here today is a testament to the importance of this subject, and we are eager to learn from your insights, sir. I would also like to applaud the organizing committee, specifically the Professor Purvasa Madam, HOD English and other faculty members, and all the students of English department and our staff members for this successful completion to be happening in 2 days. Your presence of all staff members will definitely encourage all the students. So I encourage all participants to actively engage in the sessions, challenge traditional perspectives, and contribute to the reimaginary of our literacy landscape. Once again, heartfelt welcome to all of you on behalf of Kendrapara Autonomous College to all of you. Thank you. Thank you all. Thank you very much, sir. He's a very polite gentleman, man of knowledge, and man who always encourages everybody to go forward. Thank you very much for this welcome address. Now it's time to know a little bit about the topic, the theme on which we have organized this 2-day seminar, especially we could see vocal for local, focusing on the translation. And to do this honor, I would like to invite a beauty with a brain, who has first taken a great responsibility of being the head of the department and taking the charge of this 2-day seminar. And she is my close ally, my friend, my colleague, Dr. Purvasa Priyadarshini, the head of the Department of English. I request her to introduce the theme to the audience present here. Here we go. Thank you, madam. Respected principal, sir, esteemed resource persons, distinguished scholars, honored colleagues, dear students and all present here, a very warm welcome to this academic gathering. It is both a privilege and a pleasure to stand before you today as we come together to deliberate upon the theme, Local for Vocal, Reimagining Literature and Translation in the 21st Century. So this conference is not merely a scholarly event, it's a collective intellectual space where ideas, languages, and cultural experiences converge in a meaningful dialogue. We are living in an era marked in a rapid globalization, technological advancement, unprecedented cultural exchange. So literature today travels across continents within seconds, and translation allows voice from one corner of the world to resonate in another. Yet alongside this expansion lies growing concern, the gradual marginalization of local languages, indigenous traditions, and region-specific narratives. As overlooked or reduced from a dominant, many vocal voices risk being overlooked or reduced to periphery of literary discourse. So the idea of being vocal for local
therefore emerges not as a slogan, but as an intellectual and cultural responsibility. So local literatures preserves the rhythm of everyday life, the memories of communities, the wisdom embedded in regional traditions, folk narratives, oral storytelling, vernacular poetry, and indigenous forms of expression offer alternative worldviews that challenge homogenized perspectives. So they remind us that literature is deeply rooted in place, history, and lived experience. At the same time, translation plays a crucial role in the reimagining process. Translation is not simply a transfer of words from one language to another. It is an act of cultural meditation and ethical engagement. So through translation, local narratives cross linguistic borders while retaining their distinctiveness. Translators become bridges between cultures, enabling dialogue while safeguarding the authenticity of the original voice. In the 21st century, translation has emerged a powerful tool for amplifying marginalized perspective and fostering cross-cultural understanding. So in a multilingual nation like India, this theme acquires even greater relevance. Our literary landscape is enriched by diverse languages and regional traditions, so each contributing to the cultural mosaic of the country. Translation has historically connected these linguistic worlds, allowing the stories to travel across regions and generations. Reimagining literature and translation in the context encourages us to celebrate linguistic plurality not as a challenge but as a strength. So this conference invites us critically reflect upon questions of representation, authorship, power, and accessibility in literature and translation. It encourages us to rethink literary hierarchies, explore new pedagogical approaches, engage with the local as a site of creativity, resistance, and cultural resilience. As a scholar and educators, we carry the responsibility of nurturing the spaces where diverse voices can flourish, where regional narratives can find rightful recognition within global literary conversations. So I am confident that the deliberation, discussion, and scholarly exchanges during the conference will open new pathways for understanding literature beyond boundaries. May this platform inspire the meaningful collaboration, encourage innovative research, and deepen our commitment of preserving linguistic and cultural diversity. With these words, I extend my heartfelt gratitude to all the organizers, participants, and contributors who have made this conference possible. Now let us engage with openness, curiosity, and intellectual generosity as we explore the dimension of vocal for local, reimagining literature and translation in the 21st century. Thank you. Thank you, Dr. Purvasha. In fact, it was a great challenge for all of us to decide this topic. We talked a lot about deciding this particular topic, especially on translation, because the first concern was we won't get many paper presenters for this occasion because it's a very, you could say, practical work, fundamental work that very less people from literature are involved in this topic. So it was a great concern to decide this topic, but eventually we decided that now, because this is the emerging topic in translation, and it has a great value today. So we finally came to the decision of taking this in spite of all the hurdles. And thank you very much for the courage that Dr. Purvasha has taken to deciding this topic. And now it's time. I would like to invite a young man who's very much present before the audience on the dais. He has taken a great responsibility of this institution on his shoulder. He is the administrative bursar, and along with that, a great hand of the department without whose support any program would be incomplete. So he's sitting extreme left of my side, and I would like to request Mr. Achyutananda Maharana from the Department of English to introduce the guests who are present with us, taking all the pain to introduce them. Here we go, Dr. Achyutananda Maharana.
Very good morning to one and all present over here. So it's my pride privilege to stand here and introduce today's guests and delegates. So I will go from my extreme left. So from my left, Dr. Dipti Rai, Coordinator IQAC and Head Department of Economics. Next to her, Dr. Purvasha Priyadarshini, Head Department of English and convener of this national seminar. Next to Purvasha Madam. So it's our principal, head of this institution, Professor Shantanu Kumar Jena. And next to our principal sir is today's chief guest and keynote speaker, Professor Dr. Sachidananda Mohanty, who is a national fellow at the IIAS Simla. He is currently a member of the University of Grants Commission, Ministry of Education, Government of India. He is the former Vice Chancellor of the Central University of Odisha and former Professor and Head Department of English, University of Hyderabad. Dr. Mohanty was educated at Sri Aurobindo International Center of Education, Pondicherry, University of Hyderabad, Indian Institute of Technology, Kanpur, University of Texas at Austin, and Yale University, New Haven, United States. Winner of many national and international awards such as the Katha British Council, Fulbright, Charles Wallace, and the Salzburg. He has published extensively in the field of British, American, gender, translation, and post-colonial studies. His books have appeared in Oxford, Sage, Routledge, and Orient Longman, among other notable publishing houses. Dr. Mohanty's contributions to the academic journals of travel, writing, cosmopolitanism, institutional history, early women's writing in Western India, and post-colonial cultural history of India have been widely recognized as path-breaking at the national and international level. His essays and articles have appeared in some of the leading forums in India and abroad. He served as a member of India's Commission on Education to UNESCO and was a member of the governing board of Auroville Foundation. He was a consultant to the Ford Foundation and a senior academic associate at the American Studies Research Center, Hyderabad. He was fellow Cambridge Seminar on Contemporary Writers and Warwick Seminar on Literary Translation. He is the advisor to the literary web journal www.museindia.com. And next to Dr. Mohanty, it's today's chief speaker, Professor Purnachandra Malik, who is an eminent educationalist and profound playwright. He was former principal of a government college and also deputy director of higher education of the state. Now he is playing a great role in implementing National Education Policy 2020 in the state. To his credit, he has written more than 45 plays during modern and postmodern era, particularly from 1975 to 2022. He was awarded with the Best Playwright of the State Award in 1980 for his famous play, Pingala Sahitya Gotiye Rati by Odisha Sangeet Natak Akademi. His eminent plays are Octopus, Ajata Satru, Baghra एवं कंकण लोभी पथिक मानक कहानी, निरुदिष्ट ईश्वर, अस्तगामी सूर्यर संदेश, विषर्ण वितशोक, रजा घर कथा, etc. He also wrote dialogues for 2 Odia feature films, Nila Madhava and Jivana Sangram. Also all the lyrics for the film Nila Madhava in early 80s. And next to Professor Purnachandra Malik sir, it's Mr. Ranjit Kumar Das, Coordinator RUSA, IDP, and OHSEPEE, Odisha Higher Education Potential for Equity and Excellence. So with this I conclude. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir.
He's a young body with a man of lot of experience, and that's why the institution has shouldered him the responsibility of administrative bursar. And thank you for giving us detail about the academic and creative history, legacy that the guest of today's occasion bear. And there was a beautiful introduction of all these guests. Now it's time to listen to the lady who's sitting just left to me, Dr. Dipti Roy. I would say I have seen her since joining. We all joined at the same time, and I have seen her, a very vibrant lady. Except her academic sphere, she's very much engaged in all those activities to enhance this institution to a next step. So I take this opportunity to invite Dr. Dipti Roy. She's also taking responsibility of the coordinator of IQSC, and she's also the head of the Department of English. She's very much with us, and I request her to address at this occasion. Thank you, Prabha Madam. Esteemed head of the institution, our principal Santanu sir, today's guest, chief speaker, Professor Purnachandra Malik sir, today's keynote speaker, Dr. Sachidananda Mohanty sir, Ramachandra sir, Manoranjan sir, Tapan sir, and other esteemed guests, all faculty members from the institution and other institutions and colleges, all faculty members and researchers and students, a very good morning to all of you. So I represent the internal quality assurance cell of the Kendrapara Autonomous College. As we all know that our job is the promotion of quality, ensuring quality through conducting various activities, seminars, workshops, awareness programs, etc. And there are directives from UGC and NAC to organize all these activities. So during last few years, regularly there are directives to conduct activities relating to vocal for local. So in the post-reform era, we all were targeted towards the improvement of physical capital. But in the 21st century, being vocal for local only for the physical product is not sufficient. We need to be vocal for local to preserve the culture, the tradition, the literature, and the language of our society. So in this context, the topic which is chosen by the Department of English for this national seminar is very pertinent and is the need of the hour. Through this, we will spread awareness, will spread knowledge and information among our present generation to how to preserve, how to be vocal, and how to connect our local with the global through this seminar. So I hope this seminar will bring enriching deliberations in the topic which is chosen, and it will be helpful in satisfying our goals. And at the same time, I thank and congratulate the Department of English, particularly the head of the department and the faculty members who have conceptualized such an idea for promoting the language, literature, heritage, and culture of our society and make it and to reach at the global level. Thank you very much. Thank you very much, Madam. Madam of Economics, but very much inclined to literature. Your concern for the local culture is very much, I could say, the thing that everybody should concern about. Thank you very much. She is a great help under her IQSE. She has helped a lot to organize the seminars, how physical presents, physical support, along with the monetary support that the seminar got. And it is the result of that help. Without that, it was not possible to organize this 2-day seminar. Thank you very much for this kind gesture of being a great support. And I really take this opportunity to thank you. Now it's time to listen to
Mr. Ranjit Kumar Das. He is the coordinator, RUSA, IDP. He's reader on physics, and I see from the very beginning that he is a man of various talents who you could see all those media persons present here. It is his effort that he has invited everybody to make it a grand, popular event, and I thank him very much. I request him to address this audience on this occasion. Thank you, Prabha. Good morning to everybody present on this august occasion. Esteemed dignitaries on the dais and of the dais, delegates, representatives of print and electronics media, my dear colleagues and dear students. At the outset, I must thank our team leader, esteemed principal sir, not only for encouraging but also for providing all kinds of support for organization of 2-day national conference on vocal for local, organized by Department of English of our college in collaboration with Odisha Sahitya Akademi. I am also thankful to Dr. Purbasa Priyadarshini, the convener of this conference, and her team for giving me this opportunity to share where every word has a great impact on the minds of the students. I will never try to express my audacity to speak on the theme of the topic, as we are inviting many stalwarts across our states and country to share their ideas before you. As the coordinator of institutional development program of our college, I not only encourage all my friends to organize such type of program, but also provide all kind of support possible in my part. Because this is the right platform where you can judge yourself. What is your present position in the present context? What is the gap? How you will be prepared yourself to reduce that gap? What should be your destination, as you are the best judge to know your strength and weakness. Dear students, there is a saying in our mother language, whether you understand or do not understand, you have to read Gita. Similarly, I may say, many things may go above your head, but this is the place where you can get the cream of knowledge, as the knowledge is churned here. At last, I must pray and big blessings of Lord Baldev Ji for success of this 2 days seminar. Thank you all.
Thank you, Ranjit sir. Thank you very much. Now all your waiting is over. Your anxious face is going to be illuminated with the presence and the talk of the people who are gathering to listen to. Without taking much of your time, it's my privilege to invite a person who's present with us, who in fact doesn't need an introduction, but still that I took the pain of doing that job. A great man, a great professor, very much related to this soil of Kendrapara from his maternal side. You might be know the great poet Bidut Prabha Devi. He is a very befitting and son of a great lady. So this gathering now turns from anticipation to articulation, and words gain meaning when shaped by wisdom. And it gives me immense pleasure to invite such illuminate person who was taking all the pain to come here. He in fact was so eager to come here that he came here yesterday itself, and he's going to be with us for all 2 days, and it's a great pleasure for all of us. I take this opportunity to invite the keynote speaker of this occasion, and of course the chief guest. He's also representing Odisha Sahitya Akademi, without whose help this also could not be a successful one. And he is Dr. Sachidananda Mohanty, member of University Grant Commission, National Fellow, Indian Institution of Advanced Studies, former Vice Chancellor, Central University of Odisha. So many things in there to tell about him. So I take this pause here and invite him to take the stage, take the mic, and address the audience. We are very much enlightened and waiting to listen to you, sir. And all your stage is yours. You can take as much of time and address the audience. Am I audible now? Good one. Good morning. The principal of Kendrapara Autonomous College, Professor Santanu Kumar Jana. We have a distinguished guest here, honored guest, Professor Purnachandra Malik, officials of the college, IQAC and other officials, above all the coordinators of this conference, seminar on translation and national seminar on translation, Dr. Purbasha Priyadarshini. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 young ladies out there. They are perhaps the Sutradhar. And I have been a classroom teacher. It is very disrespectful to keep the students standing. So may I earnestly request all of you to sit down wherever you can. We know that you are very important personalities here, but I think you should all sit down wherever you find a place. Because first of all, we are participants, we are scholars, we are not event managers. So I think I would request all of you to kindly take your seat. And this morning, there are 2 unexpected things have happened to me. Please take your seat. And I'll give you a choice to the audience, to the students. Would you like me to speak in English? Or would you like me to speak in Odia? All of you, the students out there. I know I am a professor of English. But you know, you just heard that my mother, Bidut Prabha Devi, whose centenary is being observed at the state level, belongs to your region, Ali, Natra and Eredanga. So we are bilingual. And if you are not bilingual, if you don't believe in L1 and L2, you can't engage in translation activities. So for me, English is not a marker of status.
English is an instrument of knowledge in the post-colonial context. But Odia is very much important. Odia is my mother tongue. And Professor Purnachandra Malik, we have been told, is trying to implement the national education policy. At the heart of the center to the national education policy is the mother tongue education. So I'm proficient in both the languages, in particular because my mother strongly believed in Odia language. I had my education in the Sri Aurobindo International School, but when I went there during the time of the mother, my mother, Bidut Prabha Devi, who had studied up to class 9, told us, you're going to read English and French and foreign languages. We're going to learn swimming, gymnastics, but you must not forget your mother tongue. And I think I am very proud of this fact, and I would like to dedicate my address today to the memory of my mother, Bidut Prabha Devi. So I want to ask you, which language would you like me to speak? Odia or English? को भाषा रे तुम चाहूच शुणिया मु उभय भाषा रे कहि परिबे मुक्त कंठरे कुह काकु इठी डरिबार नाही बिकॉज फियर हैज टू बी बैनिश्ड फ्रॉम आवर ओन मिडस्ट इटसेल्फ को भाषा रे कहिबे ओडिया रे कहिबे ओडिया रे कहिबे बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक लिविंग टू थिंग्स हैव हैपेंड टू मी प्रथमे इंग्लिश रे कहि कि तपर ओडिया कहिबे वन इज दैट अनएक्सपेक्टेडली आई हैव बीन मेड द हेड ऑफ द ओडिशा साहित्य अकादमी पूर्वाशा I've been made the head of the Odisha Sahitya Akademi, who happens to be this, one of my students. Very curious. Another thing, very curious thing that has happened here is that I have been demoted from professorship to doctorship. Purvasha, all of you, I have been demoted from professorship to doctorship. ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହାର୍ଡ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଡକ୍ଟର କରିଦେଲେ ପ୍ରଫେସରସିପ୍ରୁ be welcome. What is in a name, Shakespeare said. The rose will smell equally sweet. तो डॉक्टर हो कि प्रोफेसर हो जहाँ भी हो मोर मुख्य परिचय है मु सच्चिदानंद महांती आ मु जने ओडिया तेना हूँ मोर मुख्य परिचय ये जो ऑडियंस रे समस्त पिन ड्रॉप साइलेंस से जदि शुणिबे तार मुख्य एबिलिटी हूँ जड़े स्पीकर कर जड़े जदि वक्ता गोटे डेडिकेटेड होकि न कहे आउ जड़े जदि वक्ता से जो पल्स ऑफ द ऑडियंस न बुझी पारे से केबेले सफल हो पारे आपण मैंने देखु बर्तमान समस्त काम छाड़ी मंचर जो मैंने अच्छा आ तले बस समस्त एकाग्र हो मो मो चाहते मु कौन कहबी मु आपन को 10टी पॉइंट कहवाई चाहे मु इंग्राजी कही पारि थांती मोर लाइवलीहुड मु अर्न करछि इंग्राजी कहीकि किंतु जेपरी कहे मु इंग्राजी होछि मोर गोटे लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन किंतु लैंग्वेज ऑफ श्रद्धा जोटा कहते सेटा होछि मोर ओडिया तेणु मु ओडिया रे कहछि मु आपन को 10टी पॉइंट कहबी आमर जो वोकल फॉर लोकल हेछि किछि वर्ष तले कुहा गला टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली आमे आंतर्जातिक स्तर रे चिंता करिबा आमर जो लोकल नीड्स अच्छी आमे ता विषय रे कथार्ता करिबा गोटे स्लोगान दिया गला टू थिंक ग्लोबली एंड टू एक्ट लोकली एठी आमे देखिलु पूर्वाशा आ तांको बंधु माने गोटे स्लोगान देइचंती वोकल फॉर लोकल आमे केमति स्वर उत्तोलन करिबा आमर लोकल पई किपरि स्वर उत्तोलन करिबा मु भाबुची दुईटी स्लोगान रो महत्व अछि जेमति आमे थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली जो जागतिकरण होइछि जो अमेरिकन जागतिकरण होइछि आमे से जागतिकरण को विश्वास न करिकि आमे आमर जो प्रकार जो परंपरा अच्छी आमे ता विषय केमति बुझिबा सेटा होछि वोकल फॉर लोकल तेणु मु आपन को 8टी आपन को 10टी पॉइंट कहिबी आपन जदि एकाग्र होइकि 10टी पॉइंट बुझी पारिबे ताले मु भाबिबे मोर वक्तव्य सफल हैला नचेत पूर्वाशा कन्या प्रतिमा पूर्वाशा मो पई जहाँ खर्च करचंती मु केंद्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज को फेरी देबी आपण देखंतु 10टी पॉइंट मु जहाँ कहबी एपण देखंतु जो प्रकार गोटे स्मॉल ह्यूमर हैला आ मु जेमती आपन को एकाग्रता करके सुनुथिली आपण जेमती अर्जुन लाइक सुनुथिले एते पांडव थिले किंतु द्रौपदी अर्जुन को वरण कले काहे अर्जुन तळु को अनेकी ऊपर को जो तीरटी मारिले से प्रकृति रे अर्जुन जे
तेणु अर्जुन को कृष्ण भगवत गीतार सारथी होकर बुझाइले अर्जुन को जो एबिलिटी थिला कॉन्सेंट्रेट करवा क्लासरूम हेले जड़े जदि वक्ता एमती भाव में कहब से मैंने कौन से जिनस बुझेनि भावनी मुझे मोर कैंटीन को गले कौन हम कैफेटेरिया गले कौन हम से मैंने होकि शुणे तेणु मु बहुत खुशी बर्तमान आप समस्त चिंता को दूर करके अपन मो कथा शुणुंट प्रथम मो स्टेटमेंट गोटे प्रपोजल आपन को दौची प्रपोजिशन सेटा है ये जो अनुवाद आम कहूँ ट्रांसलेशन कहूँ सेटा 1950 मसीहा ठू प्राय आरंभ होता पूर्व आनुष्ठानिक भाव में भारत जिते गणतंत्र है आ से अनुवाद प्रोसेसटा एक्सरसाइजटा आरंभ होला कहीं आम गोटे स्लोगन पाइलु यूनिटी इन डाइवर्सिटी आमर जोटा है प्रथम 1947 मसीह आम स्वाधीन हेलु किंतु आम गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 तार मेजर डिफरेन्स होची आम से आमर निजर गोटे सॉवरेनिटी पाइलु सॉवरेनिटी माने आम निज उपरे आमर स्वाधीनता गोटे है सेटा किपरि भाव में है सेटा है आमर जो गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तापर आमर जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन है 22 जाक भाषा से 22 भाषा आम देखिलु से 22 भाषा नहीं कि आम से किसी आलोचना कलु आ प्रति थर आम देखापी पाचु से 22 भाषा पर माँ बस मो स्थान ग्रहण कर बस जहाँ कहवा अच्छी मोठू अधिका मूल्यवान नहीं बस 22 भाषा आम शेड्यूल अच्छी 8 शेड्यूल 22 भाषा आउ प्रतिथर देखापी मिलूँ जो भाषा गुड़ाक आम नाला कोंकणी भाषा एमती है तार रिटन स्क्रिप्ट नाला गोआ स्पीक रही अधिकतर अधिक भाषा आम आम कन्स्टिट्यूशन को आसूची मु भावुची एटा गोटे भल लक्षण आम मन जो गोटे एरोगेन्स थिला एटा हूँ गोटे डायलेक्ट खोर्धार जोटा कहते प्रकृत ओडिया अन्य गोटे ओडिया बलांगीर नुह सीटा भूल अ डायलेक्ट अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज बैक्ड बाय एन आर्मी एंड अ नेवी जो भाषार गोटे पॉलिटिकल पावर गोटे बैकिंग थाए सेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुए यहाँ आम शिखिलु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस जाकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन डायलेक्ट कौन आपन ओडिशा रे देखिबे प्रति 10 किलोमीटर गोटे गोटे भाषा सृष्टि होछि ए जो आम जो ट्रांसलेशन उपर आम एक्सरसाइज करूँ प्रथम कथा आम शुणा प्रत्येक डायलेक्ट को आम सम्मान दबा नॉट सो कॉल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना प्रति भाषा हूँ गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ जो भाषार गोटे पॉलिटिकल पावर बैकिंग थी आर्मी नेवी तो से गोटे अकस्मात आर्टिफिशियली गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाए तेणु आमको कहगला साहित्य अकादमी कहगला नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर इंडिया स्पीक्स इन मेनी लैंग्वेजेस आ गोटे स्लोगन दिगला जमती पूर्वाशा ये गोटे स्लोगन देले वोकल फॉर लोकल तार नूतनत्व अच्छी एंड टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली तार नूतनत्व अच्छी आम गोटे नूतनत्व दिगला जे आमर भारतर स्वाधीनता पर गणतंत्र दिवस पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कारण आम भारत हूँ क्वाजाई फेडरल देश एपाई आमको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हवा दरकार नहीं कि आमको रॉकेट साइंस जाना दरकार नहीं साधारण कथा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कारण भारत जिते निजर यूनिटी की एस्टाब्लिश करने चाहूला विदेशी शक्ति माने थिले से कहगला यूनिटी इन डाइवर्सिटी सेटा डाइवर्सिटी इन वननेस नुह किंतु समय आसी आमर यूनिटी की आम उपभोग आम रियलाइज करके आम डाइवर्सिटी जोटा अच्छे आम भय न करके से डाइवर्सिटी मान को किपरि भाव में सम्मान दबा आम पश्चिम ओडिशा आम दक्षिण ओडिशा आम पूर्व ओडिशा जो भाषा गुड़ाक अच्छी तमें ताकू किपरि भाव में यथेष्ट भाव में सम्मान दबा मु भावुची आमर भाषा भित्तिक जो प्रदेशटी अच्छी आमर जो सांताली भाषा अच्छी अन्य भाषा गुड़ा अच्छी आम यथेष्ट भाव में सम्मान दे पारूँ तेणु मूल लक्ष्य है आम जदि अनुवाद विषय आम किसी आलोचना करने जाऊँ आमको प्रथम देखापी पड़ो आम सबू भाषा आ सबू डायलेक्ट मान को आम सम्मान दबा मुझे कहली प्रति 10 किलोमीटर गोटे गोटे भाषा अच्छी डायलेक्ट अच्छी आ से भाषा गुड़ाक धीरे धीरे लोप पाई जाऊँच लोप कहीं पाचे सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी होटा दूर हो जाऊँच आम केमती सेंट्रलाइजेशन को दूर करके आम भाषा गुड़ाक किपरि बाकिबा सेटा होची कथा आम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किपरि भाव में अवस्थापना आम करवा सेटा होची गोटे कथा मु द्वितीय पॉइंट को आसछि मु कहिथिली आपन को
मु 10टी पॉइंट कहबी तापर मु निज प्लेस को नेबी निज स्थान को जीवी। द्वितीय कथा हूँ जे आमे जो अनुवाद जो एक्टिविटी करूचु सेगुड़ाक अनेक भाव में कॉम्प्लिकेटेड हो कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो अनुवाद कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो आपण शुणु अनुवाद कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो अनुवाद कॉम्प्लिकेटेड हो कारण आम गोटे पोस्ट कॉलोनियल लिविंग करुचु। पोस्ट कॉलोनियलिज्म कौन जितेबाला कॉलोनियलिज्म बाद हो गला ब्रिटिश माने आम देश छाड़ी चली गले आम भाविलु आम स्वाधीन हो किंतु जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज माने कहते एडवर्ड साइद हेले होमी भाभा हेले से माने कहते गोटे राष्ट्र स्वाधीन हो गला परे तांको स्वाधीन चिंताधारा आसेनी से पराधीन चिंताधारा आम भितर थाए जमती आम भावुचु इंग्राजी जदि आम कहबू ताले भल हम तेणु फकीरमोहन लिखिले डाक मुंशी से ताको इंग्राजी पढ़ेकी से इंग्राजी घुसी मारिला कारण से इंग्राजी पढ़ेले इंग्राजी आम पाई गोटे मार्कर ऑफ स्टेटस है आम इंग्राजी भाषा कहले लोक मैंने भावे मु कन्वेंट स्कूल पढ़ी मत बेसी सम्मान मिल किंतु से कथा जो फकीरमोहन लिखिं आम से कृतदास नुह इंग्राजी कृतदास नुह इंग्राजी इंग्लिश इज एन इंस्ट्रुमेंटालिटी ऑफ नॉलेज तेना जो आम भारत को जो मैंने स्वाधीनता देते रवींद्रनाथ टैगोर कहतु श्री अरविंद कहतु सुभाष से मैंने विदेश में पढ़िले किंतु आम पाई आम स्वाधीनता आनीदे से मैंने मल्टीलिंगुअलिज्म में विश्वास करते मु सेकेंड पॉइंट आपन करुच्ची आम जदि अनुवाद कथा विचार करवा आम मन भितर ए दास प्रथा भाषार दास प्रथा आम दूर करवा से भाषार दास प्रथा आमर दूर होनी मु पॉइंट 8 कि 9 बेलू आपन कहि किपरि भाव में आमर दूर होनी सबू पिला माने मते बुझछन तो हाँ करके कहतु हाँ जोरे कहतु बास मते बुझुचंती समस्ते आ सब छाड़ी बुझुचंती आम मनरू भाषा पाई नहीं कि गोटे दास प्रथा दूर दूर हवा उचित आम जदि भाषा आम अनुवाद करवा अनुवाद हूँ L1 आउ जो भाषा आम अनुवाद करवा सेटा हूँ L2 L1 हूँ नेटिव टंग आउ L2 हूँ इंग्रेजी बा जेकोसी गोटे फॉरेन लैंग्वेजेस आम अधिकांश समय L1 को सम्मान दौनु आम मु भावुची जो मैंने ट्रांसलेशन थ्योरीज मैंने अच्छा से मैंने कहते प्रथम भाषा जो भाषारू सोर्स लैंग्वेज को आम यथेष्ट भाव में सम्मान देवा उचित आम टार्गेट लैंग्वेज को दूर करुँ यार इम्प्लिकेशन कौन है मु 8 कि 9 पॉइंट रे आपण मान को आगे कही तेणु बहुत किसी कॉम्प्लिकेशन हो गोटे है आमर इनहेरिटेड पास्ट आमर बहुत किसी रिच इनहेरिटेड पास्ट अच्छी ये इनहेरिटेड पास्ट को आम किपरि भाव में डील करवा आमर आइडेंटिटी फॉर्मेशन रे सेटा हूँ बड़ कथा आमको देखापी पड़ो आमर ओडिशार जो इनहेरिटेड पास्ट अच्छी एठू किछि दिन पर किछि बाट गला पर एठी पड़ुछि मधुसूदन दास कर जो घर पड़ुछि आमे तांकु सम्मान करछु कारण से उत्कल सम्मेलन माध्यम सी ताकू गोटे ओडिशा को स्थापन करथिले तांको मृत्यु पर 1936 रे हला आमर जो पिला माने अछंती ए जो पिला माने एठी अछंती समस्त कोन मधुसूदन दास कर उत्कल सम्मेलन जानिचंती मु भाबुछि जेते अन्यर ओडिशार जो नौक दुर्भिक्ष हो आउ आमर बलराम दास हंतु समस्त सांगे आम उत्कल सम्मेलन विषय जाना उचित तेणु मो पूर्वाशा और कलिग्स मान को समस्त आह्वान करुच्ची ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास आपण पढ़ातु ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास जदि आपण न पढ़े आपणकर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज अपूर्ण हो तेणु यही जो प्रकार कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं कि आम सृष्टि करुचु आमर मॉडर्न आइडेंटिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड रिच आइडेंटिटी मोर सेकेंड पॉइंट है आम से प्रकार आइडेंटिटी को पुणी थे प्रोफेसर जेना आम केमती आविष्कार करूँ आपण मैंने ये बसिकी जो झील मैंने अच्छा विद्युत प्रभा देवी कि पूर्ण प्रभा देवी को जानी ना आपण मैंने ये बसिकी नीरव दस्ता कि शुणुंट जो जगार विद्युत प्रभा देवी जन्म होते पिता निमाई चरण दास किछि दिन पर आपण मैंने ये बसिकी जदि गोटे केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज अच्छा विशेष करके नारी मैंने से अति दुखर कथा आपण मैंने जानतु विद्युत प्रभा देवी किए थिले आमे भावुछु आमे जदि कॉफी कैफे डेट जाइए कही बसीगले आमर गोटे स्टेटस बदली गला आमे विद्युत प्रभा देवी विषय जानवा दरकार नहीं कि आमे आमर जो मधुसूदन दास अच्छा कि कुंतला कुमारी अच्छा विषय जानवा उचित नुह बंधुगण जानतु जे मु इंग्राजी ओडिशा और फरासी भाषा में शिक्षा लाभ कर
मु फुलब्राइट स्कॉलरशिप पाई दिथि थर जाइए किंतु मु आपन को जो कथा कहूँ मातृभाषा शिखा आमर जो परंपरा अच्छी आम ताकू शिखा से जिनसा जदि न था मुझे जड़े ओडिया हिसाब से ये ठिया होकर कहीबार मोर कौन यथार्थ ना तेणु आमको आमर जो पुराणा आम पुरातन जो प्रकार अच्छी जो विषय आम जानूँ आमर जो किचकबद्ध है जहाँ भी है आम ताकू आविष्कार करने पड़ो यहीटा है मोर कहार तृतीय कथा है आमर रिच आउ प्लूरल आउ डाइवर्स कल्चर अच्छी ओडिशार जो मान कथा सब कहली आपण मैंने हुए तो कुंतला कुमारी को शेफाली प्रति पढ़ी छड़ा आउ किसी जानी ना आपण मान रेबा राय आउ साधुचरण राय को आपको जना ना आपन को विद्युत प्रभा देवी पुण्य प्रभा देवी स्वर्ण प्रभा देवी जे लिखिं भाषीजार कागज डंगा विषय जाना ना आम जदि बसिकी ये अनुवाद उपर आलोचना करवा L1 विषय किसी धारणा ना ताले आमर UGC सेमिनार हो कि जेकोसी इंटरनेशनल सेमिनार हो तार लक्ष्य परिवर्तन हो पारनि तेणु ये जो प्रोफेसर जेना अच्छा मुझे माध्यम आह्वान करें प्राचीन आम जो लेखा अच्छी ता विषय आप जानतु ताकू जानापे सबू सब्जेक्ट आप बेनिफिटेड है आपण इकोनॉमिक्स हो आपण कॉमर्स हो आपण फिलोसफी हो आपण जानते जे फकीर मोहन सेनापति जे थिले आम लेखक तांकर पुओ थिले मोहिन मोहन सेनापति से फिलोसफी प्रोफेसर थिले आपण कौन जानते मोहिन मोहन सेनापति जने रेप्यूटेड फिलोसफर थिले से रेवेन्सा कॉलेज रे मध्य थिले आपण मैंने ओडिशार ऐतिह्य आपण अनुवाद करंतु ओडिशार ऐतिह्य आमर खाली राजनीति मैंने देवेनि आपण छात्र आ अध्यापक मैंने ओडिशार ऐतिह्य को आपण आविष्कार करेंगे ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा मध्य आविष्कार करेंगे आपण जदि देखुं बर्तमान ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा राजाराणी मंदिर में खोदैते होगी अच्छी मु आह्वान करुच्ची आपण मैंने ओडिशार परंपरा को आविष्कार करंतु जदि आपण अनुवाद करने चाहती बर्तमान मु चतुर्थ पॉइंट आपन को कहूँ चतुर्थ पॉइंट कहली आपन को देखंतु मु दुईटा आपन को इंट्रोड्यूस करी खूब कॉम्प्लेक्स आइडिया मु इंट्रोड्यूस करुच्ची आपण मैंने शुणवे मत देलमा पानी टे दियो दुईटा आपन कहूँ जड़े ट्रांसलेशन थियोरिस्ट हेले आम अनुवाद क्षेत्र में आम दुईटी जिनस देखू जड़े हेले ट्रांसलेशन थियोरिस्ट आउ जड़े हेले ट्रांसलेशन प्रैक्टिशनर आम जड़े थियोरिस्ट कहूँ के जन कहे आमको किसी थियोरी दरकार नहीं अरे दौड़ा कथा तो दौड़िली दौड़ापी स्पोर्ट्स थियोरी कौन दरकार किंतु जो मैंने एडवांस स्पोर्ट्स करूँच से मैंने कहले स्पोर्ट्स जमी फिलिपिडिस दौड़ला ओलंपिक रे दौड़ला फिलिपिडिस ग्रेस दौड़ की 22 किलोमीटर ओलंपिक दौड़ की कहला जे आम दीची जाइछु एथेन्स आउ स्पार्टार युद्ध होता फिलिपिडिस को पठेले से प्रथम ओलंपिक दौड़ की जाकि 22 किलोमीटर कहला एथेन्स जीची जाइए स्पार्टा ठू तेणु आम ओलंपिक थियोरी किसी अच्छे तेणु किसी लोक कहते आम से थियोरी बकवास कथा आम विश्वास करूँ आम खाली थियोरी आम प्रैक्टिस करुँ आम खाली अनुवाद करुँ किंतु बंधुगण मु कहूँ जे आमर जो प्रैक्टिस होची अनुवाद प्रैक्टिस इट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय थियोरी आवर चॉइस फॉर मैरिज एंड नॉन मैरिज शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द क्वेश्चन ऑफ पेट्रियार्की एंड मैरिज आमको इनफॉरमेशन दरकार आमको थियोरी दरकार से जो जड़े विनुत लॉरेंस विनुती अच्छा तांको विषय में दीपद कहि से दुईटी इंट्रोड्यूस कले जो मैंने किसी चली जाऊँच भल आमको जो मैंने इंटरेस्टेड श्रोता से मैंने ही रे जो मैंने जाऊँच अति भल कथा आम 10 जन जब भी रे सफल हम कारण आम ये क्यूरियस स्पेक्टाकल चाहूँ जो मैंने प्रकृति में इंटरेस्टेड से मैंने रे लॉरेंस विनुटी दुईटी कथा कहले आपड़ देखु गोटे कहले गोटे फॉरेनाइजेशन कले आ गोटे नेटिवाइजेशन कथा कहले डोमेस्टिकेशन कथा कहले डोमेस्टिकेशन आ फॉरेनाइजेशन ये जो पंचम प्रोपोजिशन आपन को देली डोमेस्टिकेशन कौन फॉरेनाइजेशन कौन फॉरेनाइजेशन है आम जदि गोटे नेटिव कल्चर आ गोटे विदेशी आम गोटे भाषा को आम अनुवाद करुचु से विदेशी भाषा केमती आम कथा बुझीब जमती आमर गोटे शब्द अच्छी श्रद्धा श्रद्धार कौन सी इंग्लिश इक्विवेलेंट आज्ञा ना प्रोफेसर मल्लिक श्रद्धार गोटे शब्द ना श्रद्धा श्रद्धा व्हिच इज नॉट लव श्रद्धा इज नॉट एफेक्शन जमी आमर गोटे जातीय आमर जो भाषार ये मौलिकता अच्छी से मौलिकता जे आमर जो इथोस बाय कंटेक्स्ट रे तार कौन गोटे लेक्सिकन आम विदेशी कंटेक्स्ट रे पाइबा नाही तेणु ताकू किपरि भाव में गोटे विदेशी ऑडियंस आगे आम प्रतिपादन करवा सेटा हूँ गोटे कथा कहले फॉरेनाइजेशन आ गोटे होला डोमेस्टिकेशन है विदेशी शब्द गुड़ाक जोटा अच्छी आम भाषा सेटा नाही कारण प्रतिटी शब्द पछरे गोटे चिंताधारा अच्छी से समस्ते कहती जदि गोटे भाषाटा लोप हो जाए से भाषार संस्कृति लोप हो जाए
जमती अंडमान निकोबार जरवा भाषाटा लोप हो गला ता पछरे जो गोटे संस्कृति अच्छी से संस्कृति मध्य लोप पाई जाए आपण देखंतु वर्तमान अमेरिका रे द्रुत गति रे स्पेनिश लैंग्वेज बढ़ी चली आ दक्षिण अमेरिका सेंट्रल अमेरिका जोटा है ग्वाटेमाला हंडुरास आ निकारागुआ एथिरे मध्य स्पेनिश बढ़ी चली दक्षिण अमेरिका रे गोटे भाषा अच्छी जोटा स्पेनिश नुह सेटा होची ब्राजिल आ सेठी पोर्टुगीज कारण जिते क्रिस्टोफर कोलंबस आसिले आविष्कार तथाकथित आविष्कार कले से स्पेनिश भाषा को लेकिन आसिले जहाँफल अनेक गुड़ाक नेटिव अमेरिकन भाषा इंडिजिनस अमेरिकन इंडियन को भाषा गुड़ाक लोप पाईगला यहाँ कौन लोप पाइबा उचित आमे जदि डेमोक्रेटिक लिविंग रे विश्वास करूँ भाषा लोप पाइबा उचित नुह मु पूर्व कही आमर सबू डायलेक्ट गुड़ाक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ सबू डायलेक्ट को आम आविष्कार करवा उचित आम जदि अनुवाद करवा खाली आम ओडिया आ इंग्राजी माध्यम अनुवाद करवा मु भावुची आम लक्ष्य साधन करें तेणु क्रिस्टोफर कोलंबस जो प्रकार करी लोप भाषा को लोप करदे आम चाहूँ से प्रकार कॉलोनाइजेशन न हो तेणु लॉरेंस विनुटी दुईटी कथा कहले गोटे हूँ डोमेस्टिकेशन आ गोटे हूँ फॉरेनाइजेशन आम एटा को किपरि भाव में L1 to L2 कहीपर यहाँ है मोर पंचम प्रपोजिशन मुझे मु 10टी प्रपोजिशन देकी मो स्थान ग्रहण करी तेणु कहार किसी बोर्ड हबार ना मु मूल जहाँ करी रिकास्ट करके मुझे मु आगुरी प्रस्तुत हो नी ओडिया कहवाई कि ओडिया मोर गोटे किसी परिमाण मुझे प्रकृति में मातृभक्त होती आउ विद्युत प्रांक भक्त होती आ ओडिया माँ भक्त होती ताले मु ओडिया निश्चित भाव में कहि आ गोटे कथा मु कहि पंचम कथाटा मु कहि षष्ठ कथा मु कहि आपण मैंने बसिकी आपण भावुंट जे अनुवादटा हूँ गोटे मेजर एक्टिविटी प्रोफेसर जेना अनुवादटा मेजर एक्टिविटी नुह यूरोप और अमेरिका रे देखा जाए जे जेतिकी तांकर पब्लिकेशन सब होची यूरोप अमेरिका आपण माने भावंतु से माने बहुत एडवांस देश से एडवांस देश रे मध्य बहुत किछि अनुवाद होउथबो आपण सुनिकी दुखित हेबे अवसोचनार कथा यूरोप अमेरिका रे ट्रांसलेशन होची पब्लिकेशन 2.3 2.3 भाग पब्लिकेशन होची आउ ट्रांसलेशन केते कम से माने एडवांस लैंग्वेजेस इटालियन स्पेनिश ग्रीक इंग्लिश फ्रेंच रशियन केते भाषा सब अच्छी किंतु 2.5 आपण जदि देखिबे 2.3 भागर होची आम भितर आप देखिए आ जो नेक्स्ट पॉइंट रे मु कहिबे आमर अनुवाद जो प्रकार सीन अच्छी लैंडस्केप अच्छी इकोसिस्टम अच्छी केते परिमाण रे ग्रॉसली इनएडिक्वेट आपण कहिबे तेणु मुझे कहवाई चाहे ता पछरे गोटे आह्वान अच्छी आम जदि चाहिए खाली गोटे नेशनल सेमिनार को नुह आमको ग्राउंड रियलिटी की जाकि बुझापी पड़ो आमर ट्रांसलेशन सीन केमती भाव में होपण मैंने सबू निश्चित भाव में अन्य जिनस छाड़ी मंत्रमुग्ध होकर शुणुंट बिकॉज एवरी स्पीच हैज टू बी बोर्न आउट ऑफ पैशन एंड इंटेलिजेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मुझे आपको गोटे पॉइंट कहूँ आमर जो प्रकार ट्रांसलेशन सीन आम देश में बहुत किसी अवार्ड दि जाऊँगी किंतु प्रकृति में ट्रांसलेशन होची इनएडिक्वेट मुझे आपको यूरोप अमेरिका कथा कहली 3.2 आमर होची तापर देखंतु आमर गोटे पैराडॉक्स माने सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन विलियम ब्लेक जेमती कहले द रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम कैन अ ल्यूनाटिक पोएट एंड द लवर आर द सेम विलियम ब्लेक कहले तांको गोटे इनसैनिटी तांको गोटे आख्या दिया जायतिला किंतु सी जने ग्रेट मिस्टिक थिले आ तांको भीतर जहाँ कहले द रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम आमे बोचु मॉडरेशन हबा उचित से कहले एक्सेस माध्यम जड़े विजडम को लोकेट कर शेक्सपियर जी कहले ल्यूनाटिक लवर एंड द पोएट आम सब कौच पागल आख्या दे ये पागलटा पागल भितर जो विजडम अच्छी आमको बुझापी आम क्षमता नहीं तेणु आम बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोक आम पागल बोली विचार करूँ एटा मु कहूनी शेक्सपियर कहले एंटन चेकव कहले वर्ड नंबर 6 रे कहले गोटे सुस्थ व्यक्ति को गोटे पागलखाना भर्ती कर दि जाऊँगी आ पागल मैंने हसुंट किंतु से सुस्थ व्यक्ति कहूँ मु प्रकृति जन सुस्थ मस्तिष्कर व्यक्ति रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम तेणु ये पैराडॉक्स कथा कहले पैराडॉक्सेस आर नॉट कॉन्ट्रडिक्शंस पैराडॉक्सेस आर सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन पैराडॉक्स भितर जो विजडमटा अच्छी आमको बुझापी पड़ो से विजडम भितर मुझे कहवाई चाहूँगी मु आपन को इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रांसलेशन कथा कहली मु बर्तमान आपन को पैराडॉक्स कथा कहबी आपन देखंतु ओडिया रो इंग्राजी बहुत कम होछि
किंतु बहुत पूर्व ट्रांसलेशन थ्योरी कहवा पूर्वर ओडिशार जनता माने अन्य भाषारू ओडिया को बहुत सब पढ़ुले। प्रोफेसर मल्लिक ओडिया अध्यापना करुले से जन दक्ष ओडिया अध्यापक से मो सांगे राजी हे। टम ककांकर कुटीर अंकल टम्स कैबिन आम ये ओडिशा रे पढ़ुलु। अन्य भाषाभाषी डी.एच. लॉरेंस को हो आउ डिकेन्स को हो अन्य भाषारू रवि ठाकुर को बही हो आम ताकू ओडिया रे पढ़ुलु। किंतु ओडिया को ओडियारू इंग्राजी किंबा अन्य भाषा बहुत बेसी अनुवाद हो नथिला। मु भावुची जेहेतु ओडियारू अन्य भाषा को हेई नथिला ओडिया संस्कृति ओडिया आउ साहित्य अन्य भाषा को जाई पार नथिला। ए जो भाषा को भित्तिक कहली जेमती कर्णाटकारु हो केरलारू हो से माने रवि ठाकुर को कथा को जानी से माने फकीरमोहन सेनापति को कथा जान नथिले। मु भावुची एटा गोटे अति शोचनीय कथा जे केरला कर्णाटक आउ महाराष्ट्र जो लोक मैंने से माने तांको भाषा आउ अन्य भाषा मान साहित्य विषय जानूले किंतु आम ओडिया भाषा जानू नथिले। तेणु ओडिशार विकास घटब आंचलिक विकास घटब खाली रिसोर्स भितर नुह जो मुहूर्त साहित्य आ संस्कृतिर विकास घटब मु भावुची ओडिशार विकास घटब। मु कौन सी रिसोर्स डेवलपमेंटर विकास पाई मु विरोधी नुह। विरोध हो कल कारखाना हो पारादीप पोर्ट आउ एक्सपेंशन हो धामरार हो आउ कल कारखाना हो बिल्डिंग हो यूनिवर्सिटी सब हो ता सहित मु कहि मुक्त कंठारे कहि ओडिशार प्रकृत विकास घटब आउ स्वाधीन ओडिशा एक आसब जदि ओडिशार साहित्य समाज आउ संस्कृतिर विकास घटब। तेणु आमको ग्रहण करने पड़ो आउ एटा अनुवाद माध्यम एटा है नहीं पिला माने मु जो कथाटा कहली मु कौन सी मीडिया को लक्ष्य करके कहूनी मु ओडिशार विकास रे बिलीव करे ओडिशार मेटेरियल आउ इकोनॉमिक विकास रे एठी एठी इकोनॉमिक्स रो अध्यापक अछंती से माने मते मिसअंडरस्टैंड करिया उचित नो किंतु मु गभीर भाव में मु रियलाइज करे जे प्रकृतिर विकास घटिबो जदि गोटे चेतनार विकास घटे जदि गोटे साहित्यर विकास घटे जदि गोटे सांस्कृतिक विकास घटिबो। बंधुगण आमर सांस्कृतिक साहित्यिक विकास घटी ना आम बर्तमान जाए लैंग्वेजेस मान को डायलेक्ट कहूँ आमको अनुवाद माध्यम आम जदि आमर पुनर् जो प्रकार आम जो परंपरा अच्छी मु जो परंपरा सकाशे कहली आम जदि बुझीपर आउ इंग्राजी भाषार दास न हो कि इंग्राजी को इंस्ट्रुमेंटल ऑफ नॉलेज कहवा जमती महात्मा गांधी कहते आई बिलीव इन ओपनिंग माय डोर्स एंड विंडोज टू द वर्ल्ड बट आई रिफ्यूज टू बी स्वेप्ट ऑफ my feet because of the winds of change which are coming from outside। अर्थात मु इंग्राजी भाषा मु ग्रहण करी यंग इंडिया लिखी किंतु गुजराती हूँ मोर मातृभाषा गुजराती माध्यम मु लिखी मातृभाषा लिखा मल्टीलिंगुअलिज्म विशेष करवा अनुवाद करवा आउ इंग्राजी फरासी भाषा रे आमे दुनिया सांगरे आमे भाव विनिमय करवा यह हूँ गोटे लक्ष्य। तेणु मुझे स्लोगान दौची यही मल्टीलिंगुएज माध्यम आम आविष्कार करवा। तेणु ये जो प्रकार एसिमेट्री होची इनइक्वालिटी होची भाषा भित्तिक विषय इंग्राजी आडिया अन्य भाषा आडिया अन्य भाषारू आम शिखीचे किंतु आम ओडिया भाषार जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी आम फकीरमोहन हो कि जहाँ भी हो आम ताकू यथेष्ट भाव में अन्य भाषा आम प्रकाश करें। मु गोटे आह्वान देवी ये जो मैंने बसचंती से मैंने आम ओडिया भाषार जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी बहुमूल्य टेक्स्ट ताकू मत इंग्राजी आउ बेंगली आउ भाषा करंतु कारण लिंग्विस्ट मैंने कहते आउ ट्रांसलेशन थ्योरीस्ट मैंने कहते जे आमे जदि गोटे भारतीय भाषार टेक्स्ट को इंग्राजी करवा तापेक्षा बेटर आम कर भारतीय भाषा टेक्स्ट अन्य भारतीय भाषा को कारण भारतीय भाषार सब जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी गोटे कॉमन सेंसिबिलिटी अच्छे लिटरेरी सेंसिबिलिटी जो लिटरेरी सेंसिबिलिटी और विदेशी भाषा सांगे ना भारतीय भाषार तेणु भारतीय भाषा किपरि भाव में अनुवाद करवा सेटा आम देखापी पड़ो। बर्तमान आउ बंधुगण मो 2टी पॉइंट कहूँ 9टी पॉइंट 10टी पॉइंट मु कौन डाइग्रेस करनी जहाँ मुझे पूरा संक्षिप्त कहूँ फोकस्ड होगी कहूँ आपण मैंने आग्रह शुणुंट आ मनी बैक ग्यारंटी मुझे अलरेडी पूर्वाशा को ऑफर कर 2टी पॉइंट आपन को कहे तापर मु विदाय नेबी। 9टी हूँ मु आपन को कहि आपण जो अनुवाद सब करूचंती अनुवाद पछरे गोटे पॉलिटिक्स अच्छे कौन पॉलिटिक्स मुझे यही भाषार गोटे टेक्सटा अनुवाद करी जो व्यक्ति मैंने अच्छा मुझे माध्यम गोटे पुरस्कार पाइबी मत गोटे लबी दरकार गोटे पुरस्कार पाइबा आज गोटे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइली काली ज्ञानपीठ पाइबी परदिन नोबेल पाइबी
मु भावुची गोटे सच्चा जदि कौन गोटे ट्रांसलेटर हो जो कथाटा सुजन बासनेट कहते पिला माने लॉरेंस बिनुटी विषय जमती कहली तुम लिखिल सुजन बासनेट वारिक यूनिवर्सिटी जड़े थिले मोर सौभाग्य थिला तांको देखा करने सीए एथिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कहले एथिक्स कौन एथिक्स हूँ आम मोरालिटी मोरालिटी माने आमर सेटा करवा उचित कि न करवा उचित मु भावुची गोटे भल सच्चा ट्रांसलेटर आ अनुवादक माध्यम रे गोटे गोटे रहिबा उचित गोटे एथिक्स रहिबा उचित मु एटा करिबि कि न करिबि आजिकल देखा जाउची अधिकांश सब ट्रांसलेशन होउची कारण एई ट्रांसलेशन टे कले मु ट्रांसलेशन अवार्ड टी पाइबि मते जे जार ट्रांसलेशन करची सी मते गोटे उपढौकन दब सी मते देश विदेश रे बुलेइबो एइटा होउची गोटे निम्न चेतनार लक्ष्य आमे जदि प्रकृत रे ओडिया साहित्य समाज आउ परंपरा रे विश्वास करू जो गुड़ाक अमूल्य संपत्ति आपण देखंतु आमर अमूल्य संपत्ति कौन आमर गोपबंधुकर हूँ लेखा हूँ अमूल्य संपत्ति आमर गोदावरी संघर लेखा हूँ अमूल्य संपत्ति आमर कुंतला कुमारी लेखा हूँ अमूल्य संपत्ति आमर जो सरला देवी अच्छा अमूल्य संपत्ति आमर विद्युतप्रा देवी होती अमूल्य संपत्ति आमर जो अन्य सब लेखा माने लेखा लिखिं सुरेंद्र महांती अमूल्य संपत्ति मते जड़े कहले मुझे विस्मृत परंपरा ओडिया साहित्य रे नारी प्रतिभा लिखिली आमर ये सरोज बोलते सी मोर छात्र थे मु बहुत गर्व गर्व फिल कर सी बर्तमान जामिया मिलिया जड़े प्रोफेसर अच्छा किंतु सी स्वीकार करेंगे मु सब स्वाधीनचेता ओडिया जड़े थी मु कौन से इंग्राजीर कित्रदास नी मत मुझे लिखिली सरोज मत बहुत किसी लोक कहले तुम्हें ओडिया तो जो लोक मैंने मरी जाइंट विषय कहीं लिखुच लॉस्ट ट्रेडिशन अर्ली विमेन्स राइटिंग इन ओडिशा सेज पब्लिकेशन कला तापर अन्य करुँच मानुषी पब्लिश कला आ तुम्हें जो मैंने जीवंत अच्छा तुम लिखुन मुझे कहीं जीवंत सी लिखी ना जीवंत लोक मानक जदि लिखब तुम गोटे पुरस्कार मिल मु कहली किसी पुरस्कार दरकार नहीं मुझे पुरस्कार दरकार नहीं जमती मो माँ सी विवाह करने चाहू नथिले से साहित्य चर्चा करने चाहूले आ मो माँ को जीवन जो बाहर सौम्य रंजन पट्टनायक कहले अति उत्तम कथा विद्युत प्रदेवी विवाह कले विवाह न करथिले आमे प्रोफेसर महांती की पाई न थांतु मो समय जो आसला मु भाविली एटा अति दुखर कथा मु जन्म न होइथिले भी भल ही था किंतु जदि मो माँ से इस प्रकार से जो संभावना थिला तांकर से जोटा चाहूले ऑप्शन चाहूले मु विवाह न करके करी बर्तमान से ऑप्शनटा आपण माने पाइचंती से चॉइसटा आपण माने करि पारचंती झियो माने नारी माने करूचंती मु भावुची से समय ठू ए समयटा आगे आपण भितर से चॉइसटा अच्छी तेणु से चॉइसटा को हम करने पड़ो जीवन प्रति घड़ीसंधि मुहूर्त चॉइस करने पड़े अनुवादक मध्य मत गोटे चॉइस थाए आमे जो माने मरी जाइछंती तांको कथा लिखिबा ना जो माने जीवंत अछंती तांको कथा लिखिकी पुरस्कार पाइबा मु भावुची आमर जो अमूल्य साहित्य संपत्ति अच्छी ताकू आमको अनुवाद करने पड़ो जो लेखक मान विषय मु कहली कुंतला कुमारी सुफाड़ी प्रति छड़ा आम कि जानूनु विद्युत प्रदेवींकर खद्योतिका माटीरे मनीष जोटा कि आवृत्ति कले जे मुख्यमंत्री बजेट सेशन में तांको छड़ा आम कि जानूनु मु आ गोटे आह्वान दूची पूर्वाशा मो कन्या प्रतिभा अनुमान को आगे मु आह्वान दूची आमर जो पुराना जो सब लेखा सब अच्छी आमर आइकोनिक कैनोनिकल टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक सब अवहेलित से टेक्स्ट को आम ये करवा आउ पूरा शेष में मु 10टी पॉइंट 10 मु कहूँ आपण आज्ञा कली ए बहीटी एटा लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ सरला देवी एटा मु इंग्राजी मुझे जाकि 15 वर्ष तले घर को जाइली से आमर आत्मसम्य आमर आत्मीय हेबे तांकर जो नातुणीटे थिला भारती कहला सचिवे यार किसी हेनी नड़िया कथा भितर आणिकी मत देखिला आ मु देखिली सरला देवी होती कमला देवी चट्टोपाध्याय आ दुर्गाबाई देशमुखर जड़े प्रिजन मेट थिले बेलोर जेल तांको लेखा सब संग्रह करी विभिन्न पत्र पत्रिकार कली ओडिशा रे ओडिया रे मध्य कली इंग्राजी एटा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सबुठु प्रेस्टिजियस मुझे कली मु कंटेम्परेरी राइटर को लेखिकी कौन सी पुरस्कार मोर नथिला मोर अभिप्राय भी ना मो पाई सरला देवी होती श्रेष्ठ कुंतला कुमारी रेबाराय होती श्रेष्ठ आमर आधुनिक कौन से गोटे स्लोगन पॉलिटिकल स्लोगन ने हुए ऑल रेवोल्यूशंस आर क्रिएटेड फाइनली इन द क्लासरूम ए क्लासरूम रे रेवोल्यूशन हम जो दिन ये साहित्यिक रेवोल्यूशन क्लासरूम रे हम मु भावुची यथार्थ रेवोल्यूशन हम आउ ये बहीटी मु कली आउ सरला देवी बहीटा किंडल एडिशन अच्छी और डिजिटल एडिशन अच्छी प्राय 100 वर्ष रु अधिका सरला देवी जीवंत होकर रहिले आउ जोगुड़ा को आम जदि आंतर्जातिक स्तर में प्रकाश करवा आम ताकू करिपारिबा
मु शेष कहवाई चाहे आम भितर जो एसिमेट्री अच्छी बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आम से एसिमेट्री दूर करवा गोटे भाषा जदि लोप हो जाए गोटे कल्चर लोप हो जाए आ कल्चर को रखापी हेले जागृत करने भाषा को आमको सेफगार्ड करने पड़ो आउ यही जो स्वाधीनता आमर जो करें आम जो ट्रांसलेशन बा अनुवाद गोटे आम सम्मिलन करें ये सम्मिलन मध्यम मो कहवा कथा आम जदि 10टी पॉइंट आउ अन्य पॉइंट माने अन्य वक्ता माने कहिबे आमे जदि ताकू ध्यान दबा मु भाबुची एई जो जातीय सेमिनारटा अछि अनुवाद उपरे किछि पार्मन रे एटा सफल हबो। धन्यवाद। Thank you very much, sir. It was an illuminating session. I have noted down some important points that you discussed about the concerns of translation. First of all, thank you very much for such a deeply engaging and thought-provoking keynote address. Beginning from the emergence of translation in India, your insights illuminated how translation had shaped our multilingual intellectual history. Your concern over the gradual disappearance of regional dialect was especially moving, reminding us that language loss is also a cultural memory. By foregrounding colonialism as the first major threat to translation, you urged us to think and rethink power, language, and responsibility in translation practice today. We are truly grateful for a lecture that was both intellectually enriching and ethically awakening. Thank you, sir, for such an illuminating address that reaffirmed the centrality of translation theory, while also drawing our attention to the multiple threats. And we also apologize to address you, Doctor. You were no doubt a professor. You have in fact gone beyond the stage of professor. You are a learned man. No address, no salutation could befit to you. You were above all salutations. So you're not a professor, you are not a doctor. You are a learned man who always illuminates seekers, because you are a learner. So we are all seekers. So you are beyond all salutations. You befit, just your name is enough. I think the professor is not also enough. You go beyond that. Thank you very much. And now, I would, before inviting the next speaker, who is the speaker of this session, I would tell in a nutshell about him. Where thought meets experience, dialogue begins. And he is a thinker whose words travel beyond pages and whose insights open new windows of understanding. We have got multiple opportunities to listen to you over the television, but this is the first time we're going to listen to you face to face. And now you have a great experience in terms of Odia literature. You have written dialogues for 2 movies, 2 very classic movies, and a few theaters or a few theaters, as far as my knowledge goes, you have written also. So such illuminating person is present with us. So I would like to address and request the chief speaker of this occasion, Professor Purnachandra Malik. He is a known person. Many of us know him, but still then he is a very disciple, learner, scholar of Odia literature and playwright. Also the former principal of Panchayat College. I request him to take the mic and enrich the audience present here. Honorable President, Professor Shantanu Kumar Jena, Principal, Honorable Chief Guest, Dr. Sachidananda Mohanty, Member University Grants Commission, Ministry of Education, Government of India, former Vice Chancellor, Central University of Odisha, Fulbright Fellow, Texas Austin, Yale University, United States of America,
Fulbright visiting professor, United States of America. Professor Dr. Dipti Roy, Dr. Devakant Sodangi, Dr. Ranjit Kumar Das, Dr. Achyutanand Maharana, Shraddheya Purvasha, कंपेरियर अच्छी श्रद्धेया प्रभामयी ये दी जन को आशीर्वाद करुच्ची आम सम्मुखें बस प्रोफेसर रामचंद्र बेहेरा सार को प्रणाम जनाऊँ ओडिया साहित्यर से होती लिविंग लिजेंड प्लीज गिव योर बिग हैंड्स तांका उद्देश्य सम्मुखें बस डॉक्टर सरोज रेस्पेक्टेड टीचर्स स्टूडेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स ऑल्सो बेसी कंफर्टेबल फील करी मुझे ओडिया कहि बहुत समय है बस के पिला माने तुम शुणुच मो विषय जो कहला गोटे नाटकर कथा कहगला पिंगला सहित गोटे राति मुझे नाटक रू दीटा डायलॉग कहीकि तुमको टे वार्म अप करी तापर मो वक्तव्य रखी एकादश स्कंदरे पिंगला बोली गोटे चरित्र अच्छी जदुराजं राज्य को जड़े अवधूत आसचंती से अवधूत प्रचंड ज्ञानी तांको जी जहाँ प्रश्न करुच्ची से तार सठिक उत्तर दौरान तेणु जदुराज जिते शुणिले राज्य को जड़े यही भाया ज्ञानी पुरुष आसचंती से तांको साक्षात करने को चाहिए एवं राजा जाई भेटिले जहाँ प्रश्न कले सुंदर उत्तर पाइले से प्रभावित हेले एवं से पचारिले आपण एते ज्ञानर अधिकारी किपरि हेले अवधूत कहते मोर 24 जन गुरु अच्छी से 24 गुरु ठारू मु शिक्षा लाभ करिछि से गुरुंकर जेतेबेले से दौरान तादरे कहते सूर्य मोर गुरु चंद्र मोर गुरु वायु मोर गुरु इत्यादि इत्यादि कही कही से कहते पिंगला बेश्या मध्य मोर गुरु से तो पिंगला बेश्या कथा कहते अन्य मैंने आश्चर्य स्वाभाविक जड़े बेश्या केमती एभली महान पुरुषंकर गुरु हब तेणु प्रश्न जो उठुची सेठी वर्णना करा होची जे श्रीकृष्ण कहते उद्धव को हे उद्धव तू शुण पूर्व काल रे अवंती नगर रे जड़े बेश्या थिला ता ना होची पिंगला से साधव पुरुष सहित मिलित होगापाई कंठ देला एवं रातिर द्वितीय प्रहर स्थिर है से आसब से कहानी से 10 पद गोटे 10 लाइन्स से 10 लाइन को नहीं मोर गोटे क्लासिक नाटक मु लिखी आज की 45-50 वर्ष तले जार ना हूँ पिंगला सहित गोटे राति से जोड़े डायलॉग मुझे खाली आपको कहि आप शुणिबे डायलॉगटा हूँ एमती रातिर प्रथम प्रहर आसी सूर्य अस्त हो जाइछंती प्रथम प्रहर चलुची पिंगला तांकर सहचरी को कहउछंती एबे राति केते हला यही तो उत्तर से कहूँ तांकर जी सहचरी यही तो सूर्य अस्त हेले प्रथम प्रहर आरंभ है मात्र से केतेबेले आसबे से माने साधवपुत्र रातिर द्वितीय प्रहर रे द्वितीय प्रहर केबे हम प्रथम प्रहर पर ये समयटा केड़े धीर मालविका ये समयटा केड़े धीर मालविका मालविका उत्तर दौची हाँ एक वृद्ध कच्छप भली शुणु डायलॉगटा
ये समयटा केड़े धीर मालविका मालविका उत्तर दूची हाँ एक वृद्ध कच्छप भली रातिर द्वितीय प्रहर अतिक्रांत होइछि तृतीय प्रहर अतिक्रांत होइछि चतुर्थ प्रहर अतिक्रांत होइछि से आसी नाहांती उद्ग्रीव ही से प्रश्न करुछंती मालविका को पिंगला प्रश्न करुछंती राति एबे केते हला मालविका चतुर्थ प्रहर संपूर्ण हेबाकू जाउची झरका खोली देइछि एई तो पूर्व दिगरे सिंदूरा फिटी आसिलाणी आ अल्प समय पर सूर्य उदय हेबे पिंगला कहउछंती ये समयटा केड़े चंचल मालविका ये समयटा केड़े चंचल मालविका मालविका उत्तर दउची हाँ एक बेगवान अश्व भली ये समयटा केड़े चंचल मालविका से लोक पचारुची जो प्रश्न करुची जे उत्तर दउची से एका लोक अछंती से कहूची ये समयटा केड़े चंचल मालविका से उत्तर दउची हाँ एक बेगवान अश्व भली समयर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन समयर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ये समयटा केतबेले हमको लागुची वृद्ध कच्छप भली धीर मंथर गति रे चलुची केतबेले लागुची बेगवान अश्व भली खूब शीघ्र अतिक्रांत हो जाउची ये थला से नाटक छड़ मु एबे आसीबी पिला माने बेसिकली पिला मान पई कहबी तमे यूरोप मानचित्र रे देखिथिबो फ्रांस मानचित्र देखिथिबो फ्रांस गोटे पट अछि ग्रेट ब्रिटेन जो माने हमको शासन करुथिले जो माने हमको शासन करुथिले से राज्यर ना होछि ग्रेट ब्रिटेन जहाँ को बिलात बोली कहूँ ता मझीरे अच्छी गोटे इंग्लिश चैनल से इंग्लिश चैनलटा जो अणोशे मिसी जाइए अल्प हो तार दूरत्व हूँ 26 किलोमीटर तार दूरत्व हूँ मात्र 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर एपटे रहिला ग्रेट ब्रिटेन राइट साइड रहिला फ्रांस पिला माने आश्चर्य हबो जदि जानिथिबो भलो जदि न जानिथिबो जान मात्र 26 किलोमीटर व्यवधान भितरे ब्रिटेन ठारू मात्र 26 किलोमीटर किंतु प्रत्येक फ्रांसवासी से माने इंग्रेज कहवा पाई इंग्राजी भाषा व्यवहार करने पाई घृणाबोध करती से घृणा करती इतिहास माने इंग्राजी रे कहवा पाई मात्र 26 किलोमीटर व्यवधान रे दीटा देश कहीं कारण से माने तांकर मातृभाषा को सबुठू बेसी भल पाती 26 किलोमीटर दूर ब्रिटिश थिले मध्य ग्रेट ब्रिटेन थिले मध्य से माने तांको देशर भाषा कहती नहीं जेतेबेले यूरोपर सबु देश पृथ्वीर विभिन्न अंचल को जाई सेठी कॉलोनी तैयारी करथिले सार जो कहूथिले स्पेनिश कॉलोनी मध्य अमेरिका रे थिला पोर्तुगीज कॉलोनी मध्य अमेरिका रे थिला एकदा समय थिला जेतेबेले पृथ्वीर अर्धाधिक देश पोर्तुगीज कॉलोनी अर्धाधिक स्पेनिश कॉलोनी किंतु इंग्रेज माने कल बल कौशल करी सबुजाक स्पेनिश कॉलोनी सबुजाक पोर्तुगीज कॉलोनी को निज अख्तियार को नहीं आसले तेणु मु खाली ये कहूँ गोटे प्रश्न करी पिला तुमको आम देश राज्यर ना हूँ ओडिशा आमर भाषा हूँ ओडिया सेमती फ्रांस को जदि आम नवा फ्रांस है देशर ना तांकर लैंग्वेज ना फ्रेंच मते कुह मु सब पिला को पचारुची किसी कथबार्ता नहीं निज भीतर मो कथा शुण एवं प्रश्नर उत्तर दियो आग ओडिया है ना आग ओडिशा है बुझिपार मो कथा तो आग फ्रांस है ना आग फ्रेंच है बुझिपार मो कथा आग स्पेनिश भाषा है ना स्पेन है कौटा आग भाषा ना से देश से भूखंड भाषा ठीक कह प्रथम है भाषा भाषा को नहीं से भाषा जो मैंने कहले से माने जो भूखंड रे रहिले से भूखंड को सही भाषा ना रे नामित करागला ओडिया जो मैंने कहले तांको ओडिया कहगला से जोटी रहिले तांको ओडिशा कहगला
तेणु भाषा हूँ मूल। जो लोक ता निज भाषा को चिन्हनी जानी निज भाषा कथा होनी निज भाषा कथा होला बेले से हीनमन्यता अनुभव करुच्ची से भली केबे हवा उचित नुह। भाषा हूँ आमर माया, भाषा हूँ आमर परिचय, भाषा हूँ आमर अस्मिता। तेणु आम भाषा को नहीं आम बंचा, आम भाषा आम मरिबा। आज जो ट्रांसलेशन होची तार पर आलोचना होची। मु सब पिला मानकु जणै दवा पई चाहूची जदि न जानि थिबो जान ये अनुवाद करिवार जो प्रैक्टिस ये आजिकाली रो नुआ प्रैक्टिस नुह। मनीष सभ्यता सृष्टि हवा कालरू भाषा सृष्टि हवा कालरू अनुवाद मध्य अछि, अनुवाद चलीची। प्रथमे जदि आम देखा भारत कथा, भारत में मुख्यतः तीनोटी भाषा थिला। जदि आम 5000 वर्ष तलू चलैबा कि 10,000 वर्ष तलू पलैबा देखिए मुख्यतः प्राय 3टा भाषा थिला। गोटे हूँ संस्कृत, वैदिक काल में जो संस्कृत थिला ताको प्री वैदिक कहूँ, आ गोटे प्राकृत, आ गोटे पाली। परवर्ती समय रे प्राय 2500 वर्ष तलू यही सब पाली प्राकृत संस्कृत ये अपभ्रंश होकर स्थानीय भाषा सृष्टि है। आम ओडिया भाषा सृष्टि है, बंगला भाषा सृष्टि है, मराठी भाषा सृष्टि है, कर्नाटक भाषा सृष्टि है, इत्यादि 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 विभिन्न प्रकार ही सृष्टि है। यही जो भाषा सब सृष्टि है धरी जो ओडिया भाषा आम करवा, ओडिया भाषा सृष्टि है। ओडिया भाषा प्रथम कौन कला? ओडिया भाषा जो मैंने लिखिले कौन लिखिले? ओडिया भाषा जो प्रथम आरंभ होकर तार साहित्य लिखागला से साहित्य कौन लिखागला देखिबो से सबू साहित्य केवल ओडिया नुह, ओडिया बंगला तेलुगु तमिल जहाँ कह से प्रथम सृष्टि है रामायण महाभारत भागवत जिते सब प्राचीन शास्त्र अच्छी संस्कृत भाषा थिला। से संस्कृत भाषार अनुवाद समान करलेनी। कोटी अनुवाद है आक्षरिक अनुवाद है, कोटी अनुवाद को सामान्य परिवर्तित करी नुआ नुआ कहानी करी सृष्टि है, एवं कोटी संपूर्ण रूपे से मूल कहानी की नहीं संपूर्ण मौलिक कहानी मध्य छिड़ा कर दिया गला। जमती आम कह सारला दास, सारला दास महाभारत अनुवाद करना अनुसरण करिसेंती। से जो अनुसरण कले ताको अनुसरण करी गोटे नुआ महाभारत लिखिं। जदिव महाभारत से चरित्र मान सब अच्छा भर अनेक चरित्र सारला साहित्य ना, सारला साहित्य अनेक नुआ चरित्र लिखाई। सारला साहित्य अनेक नुआ चरित्र लिखाई। आ सारला साहित्य एकदा एते पपुलार थिला, एते लोकप्रिय थिला ओडिसा रे जे सारला दासंकर कथा को आमे उद्धार करुथिले। आम लोक मैंने सब उद्धार करुथिले, आज भी उद्धार करुछंती। से लोक जानी नांती ये जोटा को मु उद्धार करी कहूची सेटा कोठु आसी से लोक भी जानिनी। सेटा हूँ सब बड़ आश्चर्यजनक कथा। आम से भूली जाइए धरी नहीं कौन केमती है मुझे कहीदे खाली बुझे दूसरी गोटे 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 उदाहरण दे आम गोटे कथार कहूँ ता संगे लाग ना से टिके कथार चिड़ीज। गंगा थिले गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी से यही भाया लोक से गांगी कहले पलैब। अरे गंगा थिले जीवी गांगी कहले जीवी से कौटे चले से मूल महाभारत ना से सारला महाभारत आसला। सारला महाभारत आसला आम पिला को छुआई शुआई पकेला बेले जो गीत गाऊ भूत आसला बोली कहू आम कह बाबना भूत आसब। बाबना भूत कौटे अच्छे कौन लिखाई बाबना भूत कथा मूल लिखाई सारला साहित्य मूल महाभारत संस्कृत महाभारत बाबना भूत कथा ना। एमती बहुत कथा देख बहुत कथा देख जमती कि सेटा गोटे अच्छी ये जो टिके कथार कह जाए झिमिटी खेलर महाभारत शुणी थो पिले गाँव में कहते झिमिटी खेलर महाभारत आरंभ हो। अरे झिमिटी खेलर महाभारत आरंभ कौटे आसला कौटे अच्छी ए कथा ये महाभारत सारला दास महाभारत अच्छे आ कौट ना। झिमिटी खेलर महाभारत हूँ सारला दास अच्छी। कौन सारला दास लिखिं? सारला दास लिखिं कौरव 100 भाई
पांडव 5 भाई एमाने डाली मांकुड़ी खेलुଥିଲେ डाली मांकुड़ गछरे चढ़िक लुचिबा गछरे जीवा आउ जणे गछकु तांको चोर जणे हबो से ताक छुईबो इत्यादि इत्यादि जेते बेले कौरव माने गछरे चढ़ी लुचुथिले तांको धरिबा पई छुईबा पई अन्य कहारी साहाय्य नବାକୁ पड़नथिला निज एका भीम से गछरे जाय ताको हलै दउथिला एवं समस्त दुर्दार हे पड़ी जाउथिले तळे एवं से चोर होते यही खेल को कहुए झिमिटी खेल ये महाभारत वर्णना कराई एक कथा आम भी एवं भी कहूँ कि आम जानू जे आम जो कथाटा कहूँ से महाभारत कौ महाभारत सारा महाभारत तेणु बहुत कथा अच्छी एमती आम जब करवा से राति पाई सरबन एत कहानी अच्छी से मो खाली ये कहबी जे प्रत्येक भाषा जिते स्टैंडर्ड भाषा सार स्टैंडर्ड भाषा कथा कहते जिते स्टैंडर्ड भाषा होती से स्टैंडर्ड भाषा है देखिए से रामायण महाभारत या सब अनुवाद कर सबु भाषा भारत वर्षर सबु भाषा यहाँ अनुवाद होती तेणु अनुवाद कला आमपाई नुआ नुह अनुवाद कला आमपाई बहु प्राचीन आम पाखे से अनुवाद कला अच्छी आम अनुवाद कर आसीचु किंतु वर्तमान जो अनुवाद कथा कहूँ सार सुंदर भाव में 10टी पॉइंट कहते से कहला बेले ता भितर ट्रांसलेशन थ्योरी कथा कहते मु खाली आपण मानक कहीदेवा चाहूँगी आमर जदि प्राचीन कालर बा मध्यवित्त जुगर मध्य जुगर सबुठ बड़ श्रेष्ठ अनुवादक किए था ओडिया साहित्य रे सी अनुवाद कहते जगन्नाथ दास से मूल मूल भागवत को अनुवाद करछन्ति ओडिया रे एते चमत्कार ओडिया रे से करछन्ति अनेक स्थल रे मूल जो भागवतर जो तार जो क्रिएटिव क्रिएशन तार जो क्रिएटिव रचना ताकू मध्य अतिक्रांत कर ही जाइछन्ति ताकू टपी जाइछन्ति मूल भागवत संस्कृत भागवत अपेक्षा तांको महाभागवत जगन्नाथ दास भागवत आहुरी मधुर होती आहुरी सुंदर होती आहुरी सुंदर पदावली भूषित होती एत सुंदर होती आम तो घरे घरे पढ़ुचे एत सुंदर होती आम तो घरे घरे पढ़ुचे आमको तो आम ताकू ग्रहण करूँ एक धर्मशास्त्र ओडिया जातिर एक अनुवाद साहित्य को तेणु अनुवाद केते पुराणा एवं केमती आम रक्ते रक्ते अच्छी आम रक्त भितर अच्छी से अनुवाद जगन्नाथ भागवत आम रक्त भितर अच्छी प्रति गाँव में एवं भी अच्छी भागवत टुंगी से भागवत ग्रंथ रखाई पूजा हो तेणु आम अनुवाद को मध्य पूजा कर आसीचु अनुवाद साहित्य को मध्य आम सम्मान दे आसीचु तेणु अनुवाद करने पूर्व जगन्नाथ दास कौन को थ्योरी पढ़ी थ्योरी पढ़ न किंतु लिखिं किंतु आधुनिक कालर जो साहित्य सृष्टि होउची आधुनिक काल जो प्रकार साहित्य को आम सठिक भाव आउ गोटे साहित्य जो प्रकाश करवा आउ गोटे भाषा जो प्रकाश करवा आउ गोटे टार्गेटेड लैंग्वेज जो प्रकाश करवा सेते बेले आमको सार जो कथा कहते 10टी पॉइंट निहाती दरकार आम पाठ पढ़ला बेले मु पाठ पढ़ला बेले पोस्ट ग्रेजुएट कला बेले केते 50-52 वर्ष होगा 52 इयर्स 52 इयर्स बेले जो मुझे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ुली से अनुवाद पाई गोटे सब्जेक्ट भी नथिला अनुवाद होची गोटे 100 मार्क मध्य नथिला किछि मार्क थिला 30-40 मार्कर गोटे प्रश्नटे आसुथिला अनुवाद कला उपरे अनुवाद साहित्य उपरे किंतु एबे अनुवाद गोटे फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट जमती ओडिया पढ़ा होची इंग्राजी पढ़ा होची लिंग्विस्टिक पढ़ा होची सेमती अनुवाद कला बा अनुवाद साहित्य मध्य पीजी स्तर रे एक स्वतंत्र सब्जेक्ट रूपे आविर्भूत होइछि व्यवहार होछि एबे जो खोला जाइछि ओडिया विश्वविद्यालय आमर से ओडिया विश्वविद्यालय रे अनुवाद मध्य सब्जेक्ट गोटे तार चली तैयारी चलछि एबे जो नुआ वर्ष आसीबो से नुआ वर्ष रे अनुवाद साहित्य ऊपर मध्य एडमिशन हबो कोटा ओडिया यूनिवर्सिटी आमर जो चलछि तैयारी होकर बर्तमान 4-5 वर्ष कार्य करुच्छ तेणु अनुवाद साहित्य को आम जाना दरकार ये अनुवाद साहित्य को जब आम जाना बा अनुवाद कला को जब आम साधन करिपारिबा
ताले आमे गोटे भाषार साहित्य को अन्य भाषार अनुवादित करी पहुँचाई परिबा। तेणु अनुवाद कला कौन हम ना दीटा साहित्य भितर दीटा सभ्यता भितर दीटा संस्कृति भितर दीटा लोक मान भितर दुई वर्गर लोक मान भितर से गोटे ब्रिज भाया काम कर जोटा कहगला सार ताको व्याख्या करुले भोकाल फॉर लोकाल नरेंद्र मोदी ए कथाटा ये स्लोगानटा आरंभ कर से भोकाल फॉर लोकाल जो कहते से मुख्यतः अर्थनैतिक पॉइंट दृष्टि अर्थनैतिक आभिमुख्य को आखि आगे रखी से आमर जो लोकल प्रोडक्ट से केमती बाजार बिक्री हम तार केमती इंटरनेशनल मार्केट को जीव बाहर को केमती जीव तापे आम प्रयास करवा उचित। ठीक सही भाया आम लिटरेचर आमर लोकल प्रोडक्ट आम लिटरेचर आमर लोकल प्रोडक्ट से लोकल प्रोडक्ट बाहर को जीवा दरकार आम साहित्य बाहर को जीवा दरकार आम साहित्य यदि बाहर को न जीव ताले आम साहित्य को लोक मैंने जानीपर ना अनुवाद साहित्यर पोजिशन कौन तार स्टेटस कौन से विषय सार गोटे उदाहरण देले गोटे कहले प्रकाशित साहित्यर मात्र 2.3 भाग अनुवाद साहित्य प्रकाश पाउथिबा साहित्य को आम जदि 100 बोली धरिबा तार अनुवाद होची केते 2.3% मात्र 2.3 भाग। तेणु या बढ़िया पड़ो 100टा बही 2टा बही एमती कहले भी पिला भल भाई बुझे। तेणु या पढ़े पड़ो या बढ़ेवा पड़ो कारण आम जदि बढ़ेवा पारिबा नाई ताहले इंग्राजी रे को प्रकार अमूल्य संपद साहित्य सृष्टि कराई फरासी भाषा कौन सृष्टि कराई जर्मन भाषा कौन है जापान भाषा कौन है चीन भाषा कौन है हम जापर यहाँ सरकार कर्तव्य हवा उचित यहाँ सरकार कर्तव्य हवा उचित। आम जानवे केवल गोटे देशर सरकार जे कि अनुवाद साहित्य पर गुरुत्व दौला एवं तार सबुजाक साहित्य को से स्वतंत्र भाव अनुवाद मान को रखी ताको प्रकाश करुला से हूँ रूस देश जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोविएट सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ सोविएट यूनियन थिला सेते बेले रूस भाषा रे स्वतंत्र भाव अनुवाद करने पाई एक ऑफिस खोलाई एक कार्यालय खोलाई से लोक मैंने नियुक्ति पाउथिले एवं से आमर जड़े ओडिशा जाकरी वैष्णव परिडा वैष्णव चरण परिडा जे पार्लियामेंट मेंबर थिले फेरी आसवा पर से वैष्णव चरण परिडा सेठी चाकरी करथिले तांकर कार्य थिला केवल गोटे कथा दिन राति 24 घंटा से केवल रशियन लिटरेचर को ओडिया रे अनुवाद करेंगे। आज देख आज अति कम 100टा भल्यूम बाहर 100 प्रकार एडिकेट बही सब 100टा बाहर गोटे नुड़ी 100टा जहाँ को वैष्णव परिडा ही अनुवाद करछंती एवं रशियन लिटरेचर से ओडिया लिटरेचर होइछ खाली ओडिया लिटरेचर नुह भारतर सबू भाषा से अनुवाद करछंती। तेणु रूसर जो साहित्य रूस भाषा जो रचित साहित्य से वर्तमान सारा पृथ्वी रे सबू भाषा रे अनुवादित ही सरी आम ओडिया सरकार करवा उचित ना ओडिया सरकार करवा उचित। ओडिया सरकार ओडिशा रे जो खूब उच्च कोटीर साहित्य सृष्टि करा जाइछि जेमती सार कहते ही इज ए ग्रेट सन ऑफ ए ग्रेट मदर विद्युत प्रभा देवी अति सुंदर साहित्य सृष्टि कर कल्पना करें साहित्य न पढ़िले से साहित्य अनेक परिमाण रे बड़ बड़ जो मैंने प्रतिष्ठित कवि से साहित्य को अतिक्रांत अतिक्रमण कर सुंदर साहित्य सृष्टि कर आम पिला माने जानी ना कारण टेक्स्ट बही कौन कविता एपर्यंत स्थानित ही नहीं जहाँ फल आम विद्युत प्रभा देवी को जानूना। तेणु सरकार दिगरे आगे आसा उचित। सरकार अनुवाद साहित्य सृष्टि करिया ओडिया को अन्य भाषा अनुवाद करेंगे एथिपाई प्रयास करने उचित एवं ओडिया साहित्यर जो उच्चांग साहित्य अच्छी से सबू साहित्यर अनुवाद ही बाहर को जावा उचित। एभली कि मो सम्मुख जो सार बस तुम पढ़ी ना पिले सार को डॉक्टर रामचंद्र बेहरा का गल्प
तुम तो गल्प न पढ़ केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई तुम न पढ़ीच ताल तुम हूँ हतभागा एवं हतभागिनी अरे पढ़ ये सार को बही मार्केट रू किणिक पढ़ चमत्कार गल्प ना से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार कौन मिछर मिलला केन्द्र साहित्य एकाडेमी केमी पुरस्कार देला भारत वर्ष जिते लेखक अच्छा ता भर से विभाग से वर्ष से श्रेष्ठ तेणु श्रेष्ठ हेले बोली तो पाइले ना कि आम आमर पाखरे थिबा सार को जाने सार को गल्प को जाने गल्प अन्न भाषार अनुवादित हो अन्न लोक जाने आम किंतु जाने तेणु भाषा पढ़ तांको लेखा पढ़ तेणु सार को लेखा अनुवाद सरकार दायित्व नवा उचित ताकू इंग्राजी ट्रांसलेट करके इंग्लैंड पठेबा उचित इंग्लैंड लोक मैंने जानतु जे सार कौ भाया गल्प लिखिं खाली आम तांकरी गल्प पढ़ू से आम गल्प पढ़े ना सेमती हेनी एटा 2 वे सिस्टम रहा आम साहित्य पढ़ू सी आम साहित्य पढ़े तेणु आज ये दिगरे जो उद्यम कर मोर यार शुभकामना करुच्ची एटी सफल आलोचना हो एवं यही आलोचना को केंद्र करी यही आलोचनार माध्यम रे आमर किसी अध्यापक बा किसी पिला चेष्टा करंतु आम भाषार गोटे बही को अन्य भाषार अनुवाद करेंगे कि अन्य गोटे भाषा को आम ओडिया अनुवाद करेंगे जो मैंने मंगला जानी हिंदी जानी हिंदी बहीटा तो सहज अनुवाद कर ना कर मु गला 12 वर्ष धरी हिंदी रू अनुवाद कर आसुची फॉर लास्ट 12 इयर्स किंतु मु साहित्य अनुवाद करू नहीं मु केवल अनुवाद करुच्ची प्रधानमंत्री मोदी को भाषण एवं अमित शाह को भाषण कारण जो मैगजीन कहगला जार मो मुख्य अच्छी संपादक से केवल मोदी भाषण अमित शाह को भाषण छड़ा किसी बाहर नहीं जहाँ बाहर से हूँ केंद्र सरकार कार्यक्रम एवं आम नुआ सरकार गढ़ीचु आम नुआ सरकार गढ़ीचु ये तेणु नुआ सरकार कथा किसी बाहर तेणु आउ थे एभली एक सारस्वत मध्याह्न मत अनुवाद विषय किसी कह सुजोग देथिबारु मु प्रिंसिपाल महोदय को धन्यवाद जनाऊँगी आउ सेमिनार चार्ज जे वर्तमान और सार तो कहीदे मोर कन्या मो झी है ताको धन्यवाद जनाऊँगी आ सबू सार मान धन्यवाद जनाऊँ सब जिते सार अच्छे समस्त को धन्यवाद जनाऊँ मो आगे मतलब मनोरंजन सार बस धन्यवाद जनाऊँ आ तुम पिला माने समस्त को धन्यवाद जनाऊँ आ अनुरोध करुच्ची किसी गोटे कर डू समथिंग चुपचाप भाषण शुणिक पढ़ाओ नहीं चेष्टा कर तुम चाहिए सब कर यस आई कैन डू जदि यही भाया गोटे मेंटालिटी तुम निज भितर रख यस आई कैन डू निश्चित भाव यू कैन डू तेणु मुझे शुभेच्छा जनाऊँगी तुम्हें भी जड़े जड़े अनुवादक हो ओडिया भाषा को विश्व दरबार में पहुँचाओ एवं विश्वर विशिष्ट साहित्यकार मान कथा को ओडिया भाषा में पहुँचाओ यही शुभेच्छा जन मोर वक्तव्य सांग करुच्ची धन्यवाद। Thank you, Professor Malik. Your words would definitely go with us for a long time after your speech. The Reverend Chief Speaker also began his address in Odia, powerfully affirming the importance of the mother tongue. He traced the emergence of different Indian languages and highlighted the fundamental role of translation in this process, citing the Ramayana and the Mahabharata as among the earliest translation works that shaped regional literary cultures. He critically questioned the supremacy of English and emphasized that all languages in the world are equally significant. Stressing that language precedes the nation, he observed that national identities are formed and named through language. He further underscored the urgent need for more translation work, citing Russia as the leading example with the highest volumes of translation in global.
Importantly, I would like to add, because you representing the power of this state, of this nation, I would like to add that the higher education text must be first made available in local languages. If the mother tongue is to be genuinely valued and sustained. That's my plea from the intellectual mind present here. Thank you very much for this illuminating session. Now we are on time. Thank you very much for all the speakers. We are genuinely on time, and that's a good sign. So it's time to release the souvenir. We in fact have got 32 scholarly papers for this seminar, and those have been compiled in our book, and this is the time to release the book. I request all the eminent guests to take the pain of standing and release the book. This book carries 32 scholarly abstracts, along with some important messages of the power bearers of this state that Dr. Purvasa has taken the pain to collect it with her hard work. She, in fact, in the meantime, she was running to collect the messages. I could know that, that's why I'm saying. So thank you very much for having this beautiful messages from all those power bearers of this nation. And I also would like to request Professor Ramachandra Behera, if he could take a little pain to come to the dais and be with us on this moment, so that we could frame with you the book. Could you please, you can beat me later. I'll show you my back. You can do whatever you like, if you don't mind, please, sir. Could you please take the pain? And I also would like to request Professor Saroj Mahananda, who is very much present here. Sir, I'm ready. Whenever you say, I'll take the appointment and I'll go to you. I'll show my back and you again also. Please, please, I take my pardon to request you. Kindly join us on the stage. And also Major Manoranjan Mahanti, sir. Professor Tapan Pati and Shimi madam. Madam, please join us. It'll be a great pleasure with you, having you on the stage. You have taken all the pain to come here. We won't let you go without having a frame with a souvenir. We kindly request everyone to join us on stage. Volunteers, I request somebody to go and escort our principal, sir. We don't want to miss him. This is a very important occasion. We want him on the stage right now. Volunteers, some of you could please go and escort him. Some of you please hurriedly go and escort him. We need to take a little pause. We don't want to miss the important person on this occasion. We would very much like to be him on the frame while releasing the souvenir. And I hope our students would come much earlier. We are waiting for you, Principal Sir. We don't want to miss you this occasion. We would very much like to include you in the photo frame while releasing the souvenir. Our Principal Sir, he is approaching to the dais. I request him to join us on the dais.
meeting is a grand success. Thank you very much, everyone. I take it great pleasure when Ramachandra Behera sir is turning the pages and looking at the souvenir. I take the great pleasure of looking at him, watching after it. Thank you very much. Yeah, he in fact told me before coming here that I would just sit in the audience. You would never ask me anything to do. I take my pardon that I pressurized him to come on the dais. But what could I do, sir? I cannot frame this moment without you. Thank you very much. I'd like to request all our guests to kindly take their seat. We still have a few moments to call it a day for the session. Our guests are requested to kindly take their seat. Well, all the important speech and address of the session is over, but something very important is waiting for us. We express our heartfelt gratitude to all our eminent intellectual minds for accepting our invitation and gracing the occasion with their inspiring presence. Your words and example have sown seeds of thought that will continue to grow long after today. May the light you have shared today continue to guide us in all our endeavors. Well, no academic gathering is complete without acknowledging the collective effort and goodwill behind it. So at this juncture, we take the moment to express our heartfelt thanks. May I now invite Madam Sujata Sorangi, she is from the Department of English, to deliver a formal vote of thanks, without which the effort would be incomplete. So, Madam, I request you to present a formal vote of thanks. Good afternoon, everybody. Respected Principal Sir, respected guest of honor, Dr. Sachidanand Mohanty Sir, respected our Chief Speaker, Professor Purnachandra Malik Sir, our RUSA Coordinator Ranjit Sir, Head of the Department Dr. Purbasa Priyadarshini Madam, Mr. Achindananda Maharana Sir, Dr. Prabhamohi Samantray, and Professor Manoranjan Mohanty Sir, Tapan Sir, Dr. Ramachandra Behera Sir, Smita Madam, and all the distinguished guests, those who are present on the dais and off the dais. I really feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on the special occasion of our two-day national seminar on the topic Vocal for Local, Reimagining Literature and Translation in the 21st Century. First of all, I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all the program advisory committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and their support to save the conference and to make the conference a successful one. On the behalf of our Department of English, I convey deep regards and a hearty thanks to our Principal Sir, the patron of this college, Professor Shantanu Kumar Jena Sir, for his constant support and guidance to make this event a successful one. Then I would like to thank our beloved Head of the Department, Dr. Purbasa Priyadarshini Madam, for her constant help and guidance that radiated a kind of source energy within us to make this event a successful one. My heartfelt thanks to our Dr. Dipti Roy Madam, IQSC Coordinator,
the head of the Department of Economics of Kendrapara Autonomous College, for being here with us today and giving us her valuable time. I also thank to Mr. Achyutananda Maharana sir, lecturer of English, Department of English, Kendrapara Autonomous College, for his wonderful guest introduction. I would also like to express my appreciation for Mr. Ranjit Kumar Das sir, who is the coordinator of RUSA and IDP, Reader in Physics, Kendrapara Autonomous College, for supporting us to make this event a successful one. And I express my gratitude for Professor Purnachandra Malik sir, who is the chief guest, who is the chief editor of the journal. The journal name is BJP Bharat, and who is also the former professor of the government college Bargarh. And sir talked about your Sarala Sahitya, and sir also talked about how to promote our Odia literature in the worldwide and in the national and global sphere. Sir also talked about, I think that sir's speech most create a kind of interest and encourage our student to read Odia literature. Sir, your speech was really very thought-provoking and it really made us think, sir. Thank you so much, sir, for such a wonderful speech. I would also like to thank Dr. Sachidananda Mohanty, sir, who is the member of UGC National Fellowship and former VC of your Central University, Koraput, Odisha, and former head of the Department of English of Hyderabad University. As Purnachandra sir had already told that sir is the greatest son of the greatest writer, greatest mother. And your speech was truly inspiring, sir. It kept us spellbound and it inspired us, and I am sure a lot of things is going to come after that speech. I express my gratitude for such an inspiring speech, sir. Then I would like to thank to all the delegates present here, to all the students, all my dear students, and all the former and our retired faculty members, and all the non-teaching staffs, like your Dr. Ramachandra Brehera sir, who is a very prolific writer, and our Manoranjan Mohanty sir, who was also the former head of the Department of English, our Kendrapara Autonomous College, and Tapan sir, who was also the former faculty of History Department of this college, and Smita madam and Saroj Mahananda sir. Particularly, I would like to thank to Dr. Prabhamai Samantrai for her cooperation. My sincere thanks to also all the sponsoring committees like NALCO and your Odisha Sahitya Day Akademi. In conclusion, I would like to say that this event would not have been possible without the support and hard work of each and everyone, those who are present here. I would like to acknowledge and appreciate everyone who tirelessly worked behind the stage in making this event a successful one. Lastly, but importantly, I would like to thank all of you for being present here and giving your valuable time and making this event a very successful one and making this event a memorable one. Thank you all, everyone, once again. Ladies and gentlemen, I now invite and request our respected guests, participants, speakers, media persons, students, and all the staff members of this prestigious institution to join us for lunch as this inaugural session is over. We request you to kindly be back by 2:30, sharp 2:30, as we resume with our technical session with promises equally engaging discussions. So everybody, please kindly join us for lunch.